Let me start. Hello, नमस्कार, धन्यवाद हमारे से दोबारा जुड़ने के लिए। आज है सेशन 3 फॉर बॉन्डिंग विद SSRians. Let me welcome आशीष, आन्या, पूजा, गुंजन एंड शैलजा जी। तो आज का लाइव शुरू करते हैं। थैंक यू क्रिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Let me start. Hello, नमस्कार, धन्यवाद हमारे से दोबारा जुड़ने के लिए। आज है सेशन 3 फॉर बॉन्डिंग विद SSRians. Let me welcome आशीष, आन्या, पूजा. Let me start. Yes. So good evening, everyone. I think there was a little sound glitch, but namaskar. It's our third day, and we're really looking forward to hearing from all of you. आज का दिन मैं क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि जब कुछ चीजें अच्छी होती हैं, इस दिन का इंतजार तो नहीं था, लेकिन सबको मालूम था ये दिन आएगा, और ये दिन जब आया है, आई थिंक इट्स अ ट्राइंग टाइम, और जो भी हम करेंगे ये 3 दिनों में, या ये 2 दिनों में, या कल, इससे ये पूरे मूवमेंट को बहुत फर्क पड़ सकता है. सो आई नो देयर विल बी एंगर, आई नो देयर विल बी कंसर्न, कुछ लोग भारी हैं. मैं अपने आप को समझ नहीं पाई हूँ पूरा दिन, लेकिन ये अच्छा प्लेटफॉर्म है बात करने का, तो इससे शुरू करते हैं. पहले मैं आशीष के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि आशीष, आप हैं यहाँ पर? आशीष नहीं है. I think he has frozen. हाँ, he says frozen. I was using WhatsApp. मैं शुरुआत करता हूँ. रोहन के सूद सर का जो ट्वीट आया हुआ है, आई थिंक 10 घंटे पहले, मैं वो गो थ्रू कर रहा था. तो एक बार सब लोग अगर वो देख लें तो उससे काफी कुछ हिंट मिल जाएगा. आप लोग भी एक बार देख सकते हैं रोहन के सूद का अराउंड 10 घंटे पहले वाला. देखा है हम. देखा है शायद आप वो 93 वोरा का रिपोर्ट के बारे में ना. उससे एक और आगे पीछे है. ओके. नहीं आशीष, अभी ये टाइम तो देखने का नहीं है. आपको क्या लग रहा है? हाउ वाज योर डे? अरे बहुत हेक्टिक था. मतलब मैं बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया काम पे, और अभी मेरे को बहुत स्लीपी फील हो रहा है. तो मैं बस अब 5-10 मिनट के अंदर सो सकता हूँ. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. बिकॉज आई थिंक कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अपने आप को बैलेंस कैसे करें और ये मूवमेंट को कैसे ले जाएं, और आज तो बिल्कुल सबको खींच लिया. हम लोग सब ऑफ, इट वाज बहुत हिल गए, मैं इतना ही कहूंगी. और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. तो बेस्ट थिंग इज कि रेस्ट इट आउट. लेकिन आज जो हुआ, और हाँ जी आशीष, आशीष इज नॉट देयर. पूजा, ओवर टू यू. पूजा, नेट का इशू है आई थिंक. हाँ, कोई बात नहीं आशीष. पूजा प्लीज गो अहेड. पूजा प्लीज गो अहेड. आज जो हुआ है वो एक तरीके से बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और शायद उन्हें ये रियलाइज नहीं है कि अब यहाँ से शायद उनका पतन होना बिल्कुल निश्चित है. वो खुद ही अपने लिए गड्ढे खोदती जा रही है, अपने लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर रही है जहाँ वो कहीं भी जाके, मतलब उनको कहीं भी कुछ मिलना नहीं है. वो बिल्कुल गड्ढे में ही गिरेंगे अब जाके, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आज अर्नब के संग किया है, जो कि एक इतना ईमानदार एक जर्नलिस्ट है जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको एक टेररिस्ट की तरह उन्होंने ट्रीट किया, बल्कि उससे बुरे तरीके से. तो ये कहीं भी ये नहीं दिखाता कि वो जनता के लिए एक सरकार है. वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने हितों के लिए सोचने वाली सरकार है. तो आई थिंक जनता को उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि शायद वो यही चाहते हैं कि जनता आए और उनको आईना दिखाए. आई थिंक I agree with that. Yeah, completely agree with you. देखो, आवाज की एक बात है. कल ही मैं बात कर रही थी. इट्स अ मिडिल क्लास फाइट. इट्स अ फाइट ऑफ द मिडिल क्लास. हम लोग को स्ट्रीट्स पे जाना नहीं आता. हम लोग को नारे
या तो हम लोग ज्यादा कर देते हैं या तो बिल्कुल करते ही नहीं है। तो ऐसा कोई मिडिल पाथ है जिसको हम लेकर चले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। नहीं तो क्या हो रहा है ना, काफी लोग बस यही सोचते रहते हम कर क्या सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं। तो क्या कुछ है ऐसा कि सबको लगे कि हाँ इतना तो हम कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी सब लोग खिले हुए हैं। दो चीजें हैं इसमें पूजा। एक तो है क्या ये हमारे साथ हो सकता है, ये डर आ गया है। इसका क्या ये मतलब है कि हम बोले ना, ये एक डर आ गया है। दूसरा, होगा 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 होगा, हो गया, अब हो गया। अब मालूम है करप्ट है, लेकिन जब करप्ट है तो कोई एक साधन है, लॉ में कोई ऐसी फैसिलिटी है जिससे हम लोग वॉइस आउट कर सके, क्योंकि ये चीजें हमें प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए। भी 100 साल होने को आ रहे हैं हमारी कंट्री को, हम लोग अभी भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा कुछ फैसिलिटी क्यों नहीं है लॉ में कि जब कुछ चीजें गलत हो रही हैं, कॉमन मैन को एक प्लेटफॉर्म मिले, वहां जाकर हम बोल सकें कि ये गलत हो रहा है। हमें ट्विटर मिला है, ट्विटर तो लॉ नहीं है ना, तो लॉ को कुछ करना चाहिए इसके बारे में। somebody has got the noise on। या तो ये जो है ना, गुस्सा तो है, लेकिन गुस्से से ना कुछ चीज सॉल्व नहीं होती, ये हमारा जनरेशन बोलता है। तो गुस्सा दिखाना है, लेकिन ऐसे दिखाना है जो इफेक्टिव हो। तो ये मेरा मानना है, और इसलिए मैं कह रही हूं कि आज मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। मेरा ऑफसेट तो हो गया है, वेट तो कर रहे थे, अब आ गए हैं, तो जो है वहां से तो ले सकते हैं, लेकिन आगे देखेंगे। तो इसलिए जो जितना लोग बोलेंगे आज, उतना मैं सुनना चाहती हूँ, बिकॉज आई नीड हेल्प एंड पीपल लाइक मी नीड हेल्प। तो जो भी आप सोचते हो होना चाहिए। ऑफ कोर्स गलत है, इसको तो अगर कोई बोलेगा गलत है तो मुझे तो सुनना भी नहीं है, क्योंकि आपको सबको मालूम है गलत है, लेकिन आपके अंदर से क्या करने की जिज्ञासा हो रही, क्या करना चाहते हैं आप, अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो इट विल बी ग्रेट। तो आशीष, इससे आपको बोलना है। If you want to sleep it over, great, वो भी ठीक है। But again, I think Ashish is frozen. No, he's not frozen. Ashish. No. हम लोग अपने एंड पे जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, हमें वो जरूर करना चाहिए। जैसा मॉर्निंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बहुत आउटरीच ना करके, बट हाँ अपनी कैपेसिटी में जरूर करना चाहिए। और मैं अगेन बोलूंगा कि एक बार रॉ इनके सूद सर जो कह रहे हैं, वो एक ट्रैप करके जो उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी एक बार देख लीजिए सब लोग, जिसने ना देखा हो। बिल्कुल, थैंक यू, गुड थॉट्स। थैंक यू। या गुंजन, ओवर टू यू बाबा। I don't know. First of all, I would like to say this thing that today Republic TV was feeling like we have lost a face. I was not feeling good. It was like something is missing. It was like the face of Republic is missing. So, plus, yes, there is frustration, there is furiousness, there is helplessness, and yes, there is a fear that if this is happening to Arnav, it can happen to us. Um, Second thing, I want to say this thing that where there's good, there is going to be bad. When there are angels, there are going to be demons. So the power of demons is for a time being very strong. So, but the power of good is always there. So there's always going to be a test between good and bad. So maybe this is a testing time, and for us to realize that yes, and plus it is a need for thought. Do we have to let our emotions get controlled? Neither do we have to get really submissive about it कि मैं क्या कर सकती हूँ, या इतना भी नहीं करना है कि यार बस आग लगा देंगे and all those. It's very easy for us to feel anger, but controlling it, it's because I made at least 7 to 8 videos today, because whatever thought was coming, I was just speaking out. But in that also, I had to be very mindful that it has nothing very aggressive, nothing provoking.
but it should convey something, because when you're saying something, you cannot be, nobody should have the right to question you that you said something that was bhadkane wala, something like that. But I just want to say that yes, I am also confused. I'm just going with the flow. I really need to calm my anger and rage. I'll use the word rage, because something like this has happened to a middle class person. Adnav, as he has been saying, he's a middle class man, and if it's happening to him, it can happen to us. And the more about who is right, who is wrong, it doesn't matter how you treat the person. Uh, the way you have treated him, it's like it's inhuman. It's beyond. I cannot even express that thing, that एक इंसान की self respect को आपने just, that thing can be done in a very decent manner, but do you do that to people who are culprits, who are terrorists? No. But you've done this to common citizens. Even Twitter handles have been subjected to those third degree tortures. Why? Because we have a voice and we want to speak. And if that is the thing, one positive thing is there are lots of politicians who have come up and condemned it. At least one that I feel Yes. that's a positive thing. Media was attacked, and media is the fourth pillar, and that is one very positive thing that people have come up and said. And this brings us to that thing that violence should be condemned. And over here, leave alone everything. My issue is this could have been done in a very civil manner. You could have talked in a very respectful manner. It could have been done without this kind of violence, being attacked. He had bruises all over his body. He had no shoes Yes. he was wearing. Yes. You dragged him inside the van. You literally pushed him. I remember something similar happened when Kangna Ranaut ke ghar pe females were doing dharna, and that Yes. was one Yes. of my fear. I will be very frank. That was one of my fear. I did not go to Jantar Mantar alone. I was like कि ये मेरे साथ हो सकता है. So and सबसे पहले उन्होंने लड़कियों को अंदर अंदर फेंका था. They did not touch any male. They touched the females. So they touched soft targets. So if you are a soft target, you will be attacked. And if we have a, I just have this humble request, let's not get too into extremes. So that's why I'm listening to everyone, because I also want to know Yeah. where No, to. you're scared. You're scared. I understand that. See, सबसे ज़्यादा for a middle class person इज्जत प्यारी होती है. We are self. It's not about money. We're educated people. We're very scared of self respect, and Exactly. for me, that is one thing that Arnab has taken off right today for me. Yes, I am that not that's scared of losing my self respect today. I felt exactly. that despite what happened, he held his thing. So I'm very thankful to him. Something Yes, I've and not he's managed to do for so many years. I just looked at this man and I said, I'm very, very proud of him. seriously. I'm He was very going proud of him. and going on saying this, that's a quality of a leader. He's going and saying आवाज नहीं रोकना, चुप नहीं होना. He Yeah. could have gone intimidated and he could have said, and that's the quality of a leader. And Yeah. that's And, he and did he not. has lost his self respect. And then you realize what lost his self respect. We respect him way more than we did More, before. yes. Yeah. There were people who said, but he talks too much, but he does this. Look how many people are saying it was wrong. So I'm so sorry. I'm just going to go to Garima. Garima, please. Sorry. So, Shailaja ji, Gunjan, a few things I want to say. First, Gunjan, don't be scared because people like you are our strength. When we see you on TV talking, we say that she is one of us. She comes on our show. She is one of us. We talk to her. We listen to her. She is one of us. So we are very few who are, there, who their voices are reaching to everyone. They are very few. So I liked what you said today, that we want to be in the game, so we have to play it, little in a clever way. So I really like that, because if everybody will um, you know will lose out or will go out of the game, then who will continue? Maybe slow, maybe in whatever way, 10 people, 5 people, but we'll stay together, and people Because will I'm come and saying that join. Yeah. if we are There's, seven people here, if one of them is like, if I am arrested, there is one voice Don't less. So think, won't be. let's be mindful.
that we don't have to Yeah. get You don't messy. you don't operate alone. You need to carry the Yes. team with you, and you have to stay where the team is. I completely agree. There's a message there that says that Alibag court rejected Thackeray Sarkar's demand for police custody for Arnab Goswami, and they've sent him to judicial custody, which is, thank God. And tomorrow there's a hearing at Mumbai High Court. Very good. So for me, that is very, very nice, because before coming on live, I was hoping I get this news, because the hearing was still going on, and And I know he'll Shailaja be ji, strong. Hanji. and Shailaja ji, about self-respect, all these people, everyone who is getting hit, who is getting affected, whom we are seeing how they are getting pulled, are becoming legends on their own. So the more problems they are facing, the more adversaries they are facing, they are becoming bigger. So I think I don't think we should make them bigger, Garima. Then then they're not part of the team. Let's say that they are helping us know that we will not lose our self-respect if we be like them. I don't think they want to grow. I think they want us to be like them. So every time they put themselves, today I heard Preeti Pandey, I heard Kale, Mamta Kale, I heard Anuja Kapoor. All these people, they know they're going to be the next people there. But you know what they said? Then so be it. So they're taking their steps. And I still feel what, listen to what, I completely want to hear you, Gunjan, that remember that we always have to be with the team and not take these radical steps forward. Completely get it. So, Usha, ma'am, what do you want to say? And one more thing, Sorry. Yeah. I have been observing this, that the PR has got activated really bad on Twitter. Matlab, the most positive and a non-controversial post are getting the such nasty things, and they have got Arnab Goswami's pictures on it, and you feel that he's the supporter, and you like kind of tweet it and like be careful who you are Yeah. following back. So, Yeah. Ashish, could you want to say something जाने से पहले? अगेन हमें अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं वो जरूर करना है, उससे शाई आउट नहीं करना है, जो होना है वो होके रहेगा, भगवान हमारे साथ है। ये सबसे अच्छी बात कही आपने, लास्ट वाली, भगवान हमारे साथ है। और आज तो ना करवा चौथ भी था, so I think please, I think we have lots of good prayers coming towards us. मैम लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ वो मुंबई में भी होना जरूरी है, वहाँ की जनता को भी बाहर आना जरूरी है, क्योंकि जिस जगह ये सब हो रहा है, जब वहाँ की जनता ही नहीं सामने आएगी तो बाकी जगहों पे उसका असर क्या होगा वहाँ होने का। मतलब उन लोगों को भी तो जागना चाहिए इस चीज के प्रति। डर एक अपनी जगह है, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन उनको शायद ये है कि वो सब साथ आए तो मे बी इस चीज से थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़े, क्योंकि लोकल लोग की जो डर होता है वहाँ के लोगों को भी, वो बाहर के लोगों से नहीं होता। मतलब यदि वो अपने ही लोगों को डरा रहे हैं तो वहाँ के लोग यदि उनके अगेंस्ट आएंगे तो वो खुद भी थोड़ा सा तो उनके अंडर प्रेशर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक हम लोग एक्चुअली शायद हम लोग पूरी बात हिंदी में नहीं कर रहे, तो नकुल 3-4 बार बोल चुके हैं कि हिंदी में बात करना है, तो लेट्स बी माइंडफुल। सो सॉरी नकुल, वेरी मच। जब थोड़ी अंदर से बात निकलती है ना, कुछ लोग अपने कंफर्ट लेवल में चले जाते हैं, और मेरी कंफर्ट लेवल थोड़ी इंग्लिश है, आई एम एन इंग्लिश टीचर, लेकिन हिंदी भी बोल लेती हूँ, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। उषा, व्हाट डू यू थिंक माँ? Good evening, good morning to everyone. And in fact, as soon as I checked in the morning news, I woke up a lot of my people in the groups. So Gunjan would have already been disturbed in the morning. I was the one who broke the news in the group. Yeah, it was disturbing. It was anticipated. The way things were going, जैसा जा रहा था एंटिसिपेट था, पर कैसा रूप रेश लेता वो हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हमको थोड़ी मालूम है कितना नीचे कौन गिर सकते हैं।
वो पॉइंट था। हाँ। पर ये सुशांत सिंह और कोरोना वायरस दोनों का बहुत ही महत्वदार रोल 2020 में जा रहा है। सबको हाँ। आंख धीरे धीरे से खोल रहा है, सबका आंख। So it is including, I would like to be a part of the tales rather than a focused. I would request that. मुझे मेरा चेहरा इतना बड़ा नहीं। देखना बहुत अजीब सा लगता है। Okay, thank you very much for the technical team. So whatever we at least हमको जो मालूम पड़ा कि excuse me, हमारा क्या किरदार है, हमारा पास कितना राइट हम चला सकते हैं, इस बार हमको थोड़ा तो मालूम हो गया कि असर्शन वो हाईली डिटर्मिनेशन बन गया कि we are not going to invest even a single pie on entertainment, which is not actually supporting our society. That's it. It was most ascertained because ये जो पैसा जाता था, ये सब पूरा जो सिस्टम पावर में है, उन लोगों को ही पैसा जाता एंड ऑफ द डे। क्यों इतना लोग इतना पावरफुल उधर है? इट बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल कैपिटल सिटी। उनको किधर से पैसा आता? हमारा जैसा लोगों से आता। हमको रोटी कपड़ा मकान के साथ एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा हो गया है, तो भुगतना पड़ा है पूरा देश। So it's like, change within is going to make the change outside the system. ये थोड़ा रूल में ये कर रही हूँ। और एक व्यू पॉइंट है, कोई बोल रहे थे कि मुंबई में क्यों लोग बाहर आके नहीं खड़े हो सक रहे, क्योंकि व्हाट आई थिंक इज वो लोग खुद पिंजरे में हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है शायद बाहर आके। let's put ourselves into their shoes. महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनका भी वो अपने ही है, उनका हालत उनको ही खुद मालूम है। And another viewpoint, there are two more points with that I would like to conclude from my side for today. We always feel Guwahati, Dwarka, Jammu Tavi, or it is Kanyakumari, or it is Bombay, or Calcutta, any place belongs to us. We don't find ourselves, हम एक जगह में एक नस को दबा दिए तो अगर हाथ या पैर या कुछ तो भी है सर में दबाए तो पूरा शरीर को दर्द होता। तो हमको भी जो हो रहा है मुंबई में दर्द हो रहा है, पर इससे ज्यादा दर्द क्या हो रहा है मालूम? कुछ नहीं कर पा रहे हम, कुछ भी नहीं कर पा रहे हम। और व्हाट इज एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये फेडरल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, फेडरल का राइट्स है बोलते हैं, पता नहीं, मैं लीगल में जीरो हूँ। अगर एक सिटीजन दूसरा जगह में कुछ भी गलत हो गया तो हमको क्या हक है? हम कुछ तो भी हक है क्या? कुछ उसको गलत हो गया तो हमको कुछ वॉइस आउट करने का। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर रॉन्ग रीजंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर करेक्टिंग द प्रोसेस। एग्जैक्टली इसके बारे में हमारा क्या किरदार है? वही ऋषभ, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, 100 साल होने को आए हैं, क्या ऐसी कुछ लीवे है जो मिडिल क्लास पीपल जो हम लोग हैं, ऐसे एक वॉइस क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्या वोटिंग एक ही तरीका है वॉइस आउट करने के लिए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बात क्यों नहीं कर पाते? तो कोई ऐसी फैसिलिटी है क्या? ये ऐसे टाइम पे ज्यादा पता लगती है। हाँ, that is one point. मैम इस बात पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। या प्लीज लेट हर। हाँ जी। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो है कि कोई भी केस है या कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होता है। क्या इलेक्शन ही सिर्फ एक ही जरिया है जहाँ पे हम लोग अपनी आवाज रख सकते हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे सब मिनिस्टर लोग आ जाते हैं ना, आप हमको वोट दो, हम सड़क बना के देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? क्या हम नहीं कह सकते हैं आप ये करके दो तब भी हम आपको वोट देंगे? जैसे कोई सरकार है एग्जैक्टली ये बात हो रही है अभी, हमें अपनी आवाज रखनी चाहिए कि आप ये करके दोगे
अगर ये सरकार है, आपका ये काम था, आपने नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम या फिर 6 महीने से पहले हमको उनको एक नोटिस देना है कि आप लोगों ने ये काम नहीं किया है, तो हम लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं, या फिर हमारे पास मत आइए वोट मांगने के लिए, No, या फिर I'm हम not इलेक्शन में talking वोट ही नहीं only. देंगे। Sorry. No, Sorry, I'm not Usha. talking only about Yes, the. ma'am. I'm not talking only about the vote. आज वोट दे दो और उनको लाइक पोजीशन पावर दे दो, बाद में बीच में 5 साल के अंदर कुछ गलती हो गई तो ऐसे चुपचाप बैठेंगे, इस बीच में कितना खराब हो सकता है। सो द पॉइंट इज हम कुकिंग कर रहे हैं, हम सब लोग कुकिंग तो इंफॉर्मेशन है, कुछ गलत हो गया बीच में उसको करेक्ट करने का कुछ तरीका रहता है ना, तो तब तक हमको क्यों वेट करने का, इतना बर्बाद हो गया, इट्स लार्ज स्केल प्रॉब्लम टू दिस कंट्री। सो मेरा एक और पॉइंट Sorry. है, हाँ इफ जी. देयर इज, आई जस्ट वांट टू नो, आई डोंट नो व्हाट इज द procedure if there is a legal implementation, if there is an error in the legal implementation, अगर कोर्ट बता दिया ऐसा, लाइक इट हैज गिवन अस सम वर्डिक्ट तो इम्प्लीमेंट कोई और करना चाहिए, उनको न्याय मिला वो पूरा नहीं होता, न्याय का डिक्लेरेशन हो गया, पर न्याय कब मिलता, वो इम्प्लीमेंटेशन होने से ही। अगर इम्प्लीमेंटेशन में धीरे हो गया या गलत हो गया, उसके ऊपर कुछ लॉ है क्या, मेरा एक और पॉइंट है। या ये पॉइंट तो one है, more लेकिन last आंसर्स point. कुछ नहीं मिलने वाले हैं आज. No, आज सब that's what थॉट्स आ रहे हैं, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन आउट एग्जैक्टली देयर. हाँ, मैम, लॉ बना लो, लेकिन वो it's सुनने वाले not. हैं नहीं, दे आर गोइंग नहीं, टू बहुत गिव अ लोग डेफ बात कर ईयर रहे टू हैं. योर वर्ड्स, हाँ, तो हाँ मतलब जी, नहीं बनता है ना। आज मैम सही करुणा बात. ने कहा था कि हम ह्यूमन राइट कमीशन को क्यों अप्रोच नहीं किए अभी तक, अर्नब जी की तरफ से भी, या और मतलब जनरल पब्लिक भी डाल सकती है उसमें पीआईएल कि ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि वो इसमें मतलब अपना करे इंटरफेयर, क्योंकि हाँ. एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का ही जो हुआ है आज उनके संग, अर्नब जी के संग, उनके फंडामेंटल राइट्स तो इन्होंने वो किया है, तो उसमें ह्यूमन राइट कमीशन का भी रोल बनता है कि वो इसमें आए और इस चीज को टेकल करे अपनी तरफ से। Okay, I think Actually, जो hold that thought. No, वर्ल्ड गरिमा, एक मिनट. जर्नलिस्ट, गरिमा, 1 minute. Hold that thought. क्योंकि ह्यूमन राइट्स, हम लोग अभी 4 लोगों ने सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात की है. She's got a good point. And let's please listen to her कि ये कर सकते हैं, sleep over it, ये एक possibility है. Thank you, Pooja. Yes, Garima, carry on. I was I saying have कि only एक one point. No, Pooja, let Garima continue. We'll talk a little. Yeah. Yes, Garima. I was saying कि एक जर्नलिस्ट जो कि एक अर्नब के स्टैचर का है, उसके साथ ऐसे करना, it right now the world journalism is actually busy covering the US elections, but if when they are done with it, they are not going to absorb it very easily. जर्नलिस्ट के साथ ऐसा करना, I think they are going to stand for it. And I'm waiting for next 2 days when I'm going to hear that, people are standing, the world journalists, the associations and the big people are standing against what has happened here. Yes. So that should happen. Yes. I'm listening. Yes, thank you. Karuna? I'm sorry, I don't know your names because the names are not flashing. So मैं जिनके नाम जानती हूँ उनको बोल रही हूँ, लेकिन I will definitely address the only gentleman after Karuna. Yeah. Hi, Shalini. Hi, everybody. Good morning here from LA. I just happened to join in again in a short notification, but I was thinking, over here when we had George Floyd event, the riot, people when they जब यहाँ पे लोग march streets पर आए थे march करने के लिए for the justice for George Floyd, उन्होंने basically जैसा यहाँ पे system था, they had a police commissioner, they had city governor, and they had 3 main councils on a panel, and there was a toll number where people could call and give their grievances. People could call and tell them. Everybody had 1 minute or 3 minutes or 30-second moment to grieve, to give their grievances about the government, how they're functioning, how the government bodies are functioning. तो मुझे नहीं पता अगर इंडिया में वो एस्टैब्लिश है ऐसा कोई नंबर या कोई ऐसा ग्रीवेंस
grievance from the public for the government agencies? If not, then we need to establish that. Because वो नंबर हर सिटी, हर रीजन, हर स्टेट में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, और ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो के दिमाग में याद रहे, like टोल फ्री नंबर. तो अगर ऐसा एक क्रिएट किया जाए, I'm sure कि वो lines, you know, they can be busy or what, but those will be also effective way to bring attention of our, you know, government above in the positions. But I was just thinking, because George Floyd का जो incident यहाँ हुआ था, बहुत लोगों ने गालियां दी कमिश्नर को, बहुत लोगों ने गालियां दी, और उनका सिर्फ काम था बैठकर सुनना, और पब्लिक ने इतना उनको झाड़ा है कि अगर वो नीचे भी देखें, and they are not having a video, you know, public is calling them on video conference, और अगर government bodies or officials अगर वो ध्यान से भी नहीं सुन रहे थे, oh, they were getting yelled at by public left and right. So, you know, we need to take ownership. We need to go and establish this helpline and this grievance line. And I don't know, jo bhi ITs agar SSRians hain, I think like let's come up with that, because those are the things that we can reach through our phone, you know, as an individual, as a common man. Mujhe laga ki wo shayad agar ek, you know, as a suggestion I'm giving, I just hope that that follows through. But that's about it. Filhal, we can write emails, और लेकिन एक collective drive हो emails का to the PMO office and the HMO office. बस ये एक ही है, but I think आज solutions नहीं है, आज सुनना है, क्योंकि something will come out of it. So thank you, Karuna, very much for this. I was just thinking all about the solution, like क्या हो सकता है जो हम change कर सकते हैं, because I don't know, my mind works that way. So yes. Thank you. Hi. Yes, Shailaja ji. First, thanks Karuna for that information. एक और क्या है कि legal implementation and regional kind of operations अभी तो हम देखे हैं, महाराष्ट्र का ऑपरेशन कैसा है, दिल्ली का कैसा है, राजस्थान अलग अलग जगह में अलग अलग जैसा है, पर हम सब लोग नाच करते हैं, हर स्टेट हमारा स्टेट है क्योंकि हम इंडियंस हैं. पर एक और आइडिया आया था कि is it possible to check with advocate Abhignya and ask what we SSRians in this group can do in this situation, either for Republic, and we are not going to stop for SSR. कितना साल होने दो, परवाह नहीं है हमको, तो हम सब लोग जिंदगी देके हैं, एक इंसाफ के लिए पूरा जिंदगी हम बिताया है. तो ये एक और पॉइंट है, साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि कोई कह रहे थे हमको मुफ्त में फ्रीडम मिला, इसलिए हमको मालूम नहीं है इसका वैल्यू. पर शायद ये ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में एक छोटा सा लड़का एसएसआर और रिपब्लिक के बारे में देख के इतना रो रहा था. सो इनफैक्ट बच्चों को भी, हमारा अगले जनरेशन को हम क्या देने वाले हैं, डराए का इंसान फ्रीडम नाम का, हाँ, इट्स लाइक यू नो नेम से फ्रीडम दे रहे हम. Are we handing over our you know, ancestor treasure or whatever the property of a freedom, in what form we are going to pass it over to our next generation? Yes. I'll go to the gentleman here. Sir, आपका नाम नहीं मालूम मुझे. Thank you, Usha. Yeah. आप अपना नाम बताएंगे क्योंकि नाम नीचे फ्लैश नहीं हो रहा है. Okay, my name is Tarun Gupta. Hi, Tarun. Am I audible? Yes. Yeah. So actually, yeah. Sorry, might be. Actually, I came. मुझे वही question था, मतलब is there any update about the Vibhor, or I thought might be the Varun will be there. So Varun, every live, there's only one thing. He has no information. He does not get information on Vibhor. Every live he says that. That is the main thing. But the people have been giving updates on Arnab right now. I just saw in the chat down that he's been given 14 days judicial custody, but we don't know what is going to happen tomorrow. That's it. Whatever you see on Twitter is what everybody knows on Vibhor. He has not come out himself and given anything out. Yeah. So that is the main thing. उनके father की तरफ से कोई information आई हो, that's what I'm asking, because उनका तो I think
उनकी तरफ से कोई ट्वीट आया नहीं आफ्टर द 15th ऑफ अक्टूबर, कोई ट्वीट नहीं है, कोई ट्वीट पोस्ट नहीं किया उसके बाद तो उन्होंने। नहीं नहीं, कंप्लीटली नहीं। एंड हाँ जी, उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे वो उनकी फैमिली की तरफ से अपडेट आते हैं रोज देखिए कि मतलब कुछ होता है जी, उसमें हेयरिंग का होता है या कुछ भी होता है तो अभी तो उनकी बेल हो नहीं पा रही है, तो अभी ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। यदि होगा तो उस पे अपडेट आ जाएगा उनकी टेलीग्राम ग्रुप पे। That's your okay, answer. okay. Yeah, Okay. Thank you, ma'am. Thank you. you're welcome. You're most एक बात अभी जो करुणा ने कही थी कि कोई ऐसा ऐसी कोई वेबसाइट या समथिंग कोई लिंक है, तो एक पीएम एक नरेंद्र मोदी करके ऐप है, आप सबको पता होगा आई थिंक। तो उसमें एक मन की बात सेक्शन होता है, सेशन उस होता है उसमें एक सेक्शन, तो उसमें आप लिख सकते हैं, आपको जो भी अपना ओपिनियन हाँ। लिखना है सरकार को या अपना जो भी रिक्वेस्ट लिखना है आप उसमें लिख सकते हैं। तो आज मैंने भी लिखा और पहले भी लिखा था मैंने, जो ये सब हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, और उसमें बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो आप भी सब चाहे, यदि आपको अभी तक नहीं पता था तो आप लोग अब चाहे तो उस पर लिख सकते हैं अपनी अपनी ओपिनियन, जो भी आप सरकार को बोलना चाहते हैं, जो भी आपका है। हाँ जी, या करुणा कुछ I बोलना think चाहते हैं इसके ऊपर? सॉरी, हाँ कतरू। आई थिंक उनको गवर्नमेंट या एजेंसीज तक इतना तो उनको मालूम है कि दे हैव टेकन द विपोर इनटू द कस्टडी। अगर वो भी मन की बात के थ्रू अगर पहुंचाएगा इस बात को तो आई डोंट थिंक आप इट्स पहुंचा दो पहले, रेलेवेंट। मतलब या नहीं आप, इट स्टार्ट्स विद आई, तो आप पहुंचाओ। आई थिंक जो पहुंचाना चाह रहे हैं डेफिनेटली कर रहे हैं। हाँ, एफर्ट करने वाले सिंगल कर हैंडेडली। रहे हैं। हाँ जी, कर बिल्कुल राइट बिल्कुल। राइट क्योंकि ना आप कर दो, आप इंफॉर्मेशन दे दो, इट्स डिफिकल्ट। देयर इज नो प्लेटफॉर्म जहां पर कोई आंसर्स मिलते हैं। ये आप देख रहे हो, जब से ये हो रहा है सबको पता है ऐसा है, सबको पता है ऐसा है, लेकिन आंसर्स ढूंढने से चले जाते। इसीलिए हम जब 3 दिन पहले हमने बोला यहाँ किसी को आंसर्स नहीं मिलेंगे, या कोई एक्चुअली आई अलाउड यू बिकॉज इट्स फाइन, यू न्यू, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ही है कि लेट्स बी कैंडिड। You're asking questions. Who is Tarun? Why are you here? Why are you talking about Vibhor? आपको विभोर से क्या लेना देना है? आप क्यों जानना चाहते हैं विभोर के बारे में? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम तरुण से मिले। So, तरुण कौन है और क्यों आया है? बट तरुण एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैम अच्छा वो मैं मैम इस वही जो भी इशू चल रहा है, आई थिंक मैं जून से फॉलो कर रहा हूँ। मैं कभी जोड़ नहीं पाया, लाइक एज अ लाइव नहीं जोड़ पाया। मतलब वरुण के शो को भी फॉलो किया है, वो सब देखा है, बट कभी जोड़ नहीं पाया। मुझे लगा अभी एक्चुअली वरुण का ही शो होगा और मुझे लगा भी सिर्फ 4 लोग हैं, तो आई थिंक आई हैव अ चांस टू गेट इनटू द लाइव और समथिंग। वरुण सुन रहे तो हैं। इट्स हाँ ओके जी, इट्स बोलिए। ओके। हाँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगा आज चांस है, शायद 4-5 लोग हैं तो हो सकता है मुझे शायद चांस मिल जाएगा। अभी जल्दी मैं पूछ के जो भी क्वेश्चन होगा या कुछ भी वही होगा, नहीं मेरे पास तरुण, एक्चुअली विभोर की भी कोई अपडेट नहीं है। मेरा सवाल है, आप पूछ क्यों रहे? आप बताइए कि देखो, आप जब से इधर आए हो आप हमारी स्ट्रेंथ बने हो, हम आपकी स्ट्रेंथ बने, तो आप आए हो। एंड राइट। आपका ये जर्नी कैसा रहा है जब तक? एंड क्या आप डिफीटेड फील कर रहे हो? क्या आप में अभी भी जोश है? या फीलिंग डिफीटेड, और मैं बोलना नहीं चाहता डिफीटेड। मैं अभी ये डिफीटेड बोल के और लोगों को डिमोटिवेट करूं या कुछ ऐसा बोलूं, इससे कोई कर नहीं फायदा नहीं है। पाओगे, कर नहीं पाओगे, वी बट आर बोलो। गेटिंग टुगेदर। defeated, how can you be defeated? हाँ, यस, एग्जैक्टली। या दैट्स राइट। या Where is the एग्जैक्टली। Josh? We need the सो Josh. ये जरूरी है। मैं इस पे ना एक Yeah, पॉइंट बोलना there is a चाहती हूँ। कभी Josh. भी आपको There is a Josh. 1 सेकेंड, Yeah, अगर आप yeah. मैंने ये पहले भी बोला है, whenever you have defeated you on your social platform, आपको कोई लोग फॉलो करेंगे, 5 ही फॉलो कर रहे होंगे। आप उन 5 का सोचो जो ये कहते हैं कि नहीं हमें तरुण इज माय इंस्पिरेशन। आपने अगर ये बोला ना, वो 4-5 लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड टू कीप दोज 5 पीपल मोटिवेटेड। Right. सो May I come in? नेगेटिव होना बहुत आसान होता है, अपने आप May को I पुल come आउट in? करना बहुत सही, बहुत बिल्कुल Yes, सही। please, Yeah, hats please. off. बिल्कुल सही। I'm sorry. Also, your name, please. I can't. I don't know your. I'm Twinkle Patel. Thank you, ma'am. Thank I you. was born in Mumbai. I stayed there for 28 years before I moved to London. Right now I'm in London, and I so
feel passionately about what's going on in Mumbai, it's just not right. And it's time to speak up. But what I'd like to say is, whatever is going on, we need professionals to come in together and interact as to what needs to be done. Now, we've got people like Ishkaran Bhandari. We've got people like Subramanian Swamy. We've got people like Dr. Padma. They need to come on a common platform, discuss things where people have their own ego, people have their own angle, people are working individually. Nothing is going to happen. So the whole idea is professionals in their own respective fields should come together, discuss this, and sorry, come there's up with a somebody, some solution. camera making noise. Can we keep your cameras on mute, please? And Yes, so thank you. these intellectuals, when they are professionals in their own fields, like advocates, lawyers, intellectuals in their own fields, when they come together and discuss this, and they can come up with a solution, because they are the people who know the law. Yes. We as individuals can just discuss, take out our, aggressiveness, show our emotions, but we actually can't do much. The intellectuals, the professionals in the field are people who can actually act. They know the law. So Yes. all these people, even for the SSRians, I would say, Ishkaran Bhandari, he comes up every day, says a 5-minute speech. What's the point? He's an individual. He's working as an individual, right? Yeah. So I would also like to say that even someone like Arnav, with all his sources and resources, was not able to save himself. I'm sure he has all the sources and resources, and I'm sure he knew this was coming up. He did not take anticipatory bail. Why didn't he do that? I mean, because you're he's not asking guilty. Because he's not guilty. No, but with the things going He's not around, guilty. He has not committed any crime to take anticipatory bail. Exactly. We Please all know that. don't demotivate people. No, I'm Please. not demotivating people. No, she's I'm not doing sorry, that, Rupa. Shailija I'm ma'am. not doing I'm that. sorry, Shailija ma'am. My apologies to you. may I? I'm not Without doing that. even, I'm Twinkle, sorry. Ma'am, may I? I don't agree with this. Yes, Don't yes, completely demotivate fine. people. I want to answer If you that. want to I want to encourage answer that. people, encourage. If not, That is exactly please what don't I'm doing. demotivate. I'm not Ma'am, I Do want to not answer that. demotivate May I people. please? Yeah, Rupa, can I talk I'm to sorry, Pooja, ma'am. please? Yes, I'm I sorry, know. ma'am. I know you are. मैम जो आप I'm कह sorry. रहे हैं ना कि हमें लॉ का पता होना चाहिए, तो हमें तो भले ही सब पता और हम भले ही सब मानते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो माने उस चीज को। नहीं, इसीलिए आप तो मैं कह रही हूँ कि आप जो बेल की बात Twinkle, आप जो बेल की बात कर रहे हैं ना, Sorry, Pooja, 1 minute. आपने जो भी Pooja, 1 minute. Let one person finish. You don't have to answer immediately. Okay. We just have to let her finish. It's all about listening. My whole idea of moderating this is you have to listen to people. You cannot. We have to listen and then talk. So I'm going to let Pooja talk now. And please listen. There's no need to react. Everybody has to have their opinion. And we can feel bad or we can feel good. And today, tendency is we're all in a bad mood. So completely fine. But everybody has a right to speak. This is exactly what went wrong today. So I'm going to go to Pooja now, please. Yes. मैम प्रदीप भंडारी ने पहले से ही अपना सब कुछ इंतजाम कर रखा था बेल वगैरह का, लेकिन फिर भी उन्हें बिहार से बुला के उन्हें अंदर डाल दिया, क्योंकि हम तो सब मान रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी तो माने उस लोग को, वो भी तो उस हिसाब से चले, उस कायदे से चले। वो चलना ही नहीं चाहते, तो आप कितने भी लॉ जानते हो, आप कितने भी अरेंजमेंट कर लो, वो आपके सब फेल कर देंगे। उन्हें अपने हिसाब से चलना है। Thank you, Pooja. Yes, Twinkle. Yes, I'd just like to say that when these intellectuals come together on one platform and they talk and discuss, like I'm going to mention a few names, right? We have Ishkaran Bhandari, we have Ujjwal Trivedi, we have Dr. Padma, we have and a couple of forensics doctors like Dr. Bhupesh, sorry, I don't know his last name. So if these people come on a common platform, discuss it, come to a solution or come to an understanding as to how to progress further from here, then they could come to an understanding and a solution.
because we are discussing as individuals. We are not expert in No. these fields. We are not discussing. This is not a discussion platform. We are having a conversation, because what is happening is we are going to these people and we are listening to them every day. That's right. Yes. Yeah, but they are not the only SSRians out there. We are also SSRians. And right now, for me, a Rupa, a Pooja, a Karuna, a Nosh, a Gunjan, and a Twinkle are as important as an Ishkaran Bandari or Dr. Padma. I do not want to undermine anybody's feelings. I mean, what makes, we are all equal, and there is no one who can equate. And that's the reason why we as a team said, and we requested Varun, and we said, we need a platform where we don't want to look for solutions. We want to hear each other out. For God's sake, we're going through so much. कितना हो रहा है हमारे साथ, और हम लोग सिर्फ सब जगह जाके आंसर्स ढूंढते हैं. क्यों ढूंढे? हम लोग एक दूसरे की सुनेंगे, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे. और पूजा कौन है, रूपा कौन है? रूपा 2 दिन से आ रही है. करुणा कल आई थी, गुंजन 2 दिन आई है. लेकिन ये जो आकर इन्होंने जो दिया है मुझे, मैं कितनी भी बात सुन लूं, मुझे लगता है कि ये मेरे लेवल की बात हो रही है. और कभी कभी मुझे मेरे लेवल से बढ़ना है, बिकॉज मुझे भी देखना है कि मेरा रोल कहाँ जा रहा है, और हम लोगों को अपना रोल भी देखना है. कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई ये क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, नहीं, हम लोग कहाँ हैं इन सब में? ये लड़ाई हमारी भी तो है ना. तो इसीलिए इट्स गुड समटाइम्स हियर पीपल आउट, एंड सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, एटलीस्ट कैंडिड कॉन्वर्सेशन में तो नहीं मिलेगा. एंड बट आई थिंक आपका जो ओपिनियन था ये वैल्यूएबल है, एंड ये वैल्यूएबल है क्योंकि अगर कोई सुन रहा है और कोई उनको मिलाकर रखेगा, इट विल बी योर कंट्रीब्यूशन. तो वॉट एवर यूर फीलिंग, यू हैव स्पोकन, एंड दैट इज रियली गुड. नौश, आप हाथ उठा रहे हैं. रूपा, कैन आई गो टू नौश एंड देन कम टू यू, और you first? I have 10 minutes. I had to go to work. No. Then Nosh, then This Rupa, is my ये मेरा job पे जाने का time होता है. Sorry, Rupa. So Carry on. that's Your why turn. I wrap up so fast, because my waiting time is so long. Yes, sorry. यही प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, मैं I'll remember. हिंदी में बात कर लूंगी, क्योंकि आप बोल रहे थे कि I'll try not English mix करने का कोशिश नहीं करूंगी. मैं तो कर रही हूँ. देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ. आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, ना कि किसी एक पर्सन के पर्टिकुलर चीज पे बात कर रहे हैं, राइट? अर्नब के साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है. These all things are planned. So we can't यहाँ हम बैठ के ये नहीं बोल सकते ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. नहीं, ये सब प्लॉटेड है. मैं बताती हूँ आपको, जो क्या नाम है उस बच्चे का, जो ठक्कर, सामित ठक्कर, उसका बेल हुआ. बेल होते ही नागपुर का कोर्ट में वो बाहर निकला, पैर रखा, मुंबई पुलिस ले लिया. इसका मतलब क्या होता है? It's already planned. This is gonna happen. You have to do this. So it's already planned. He can't go and take an anticipatory bail for it. क्योंकि एक ही इसमें केस में उसे ले गए. एक बार तुमने बेल दे दिया कोर्ट ने, क्यों लेके गए फिर? ऐसे ही हुआ प्रदीप के केस में, प्रदीप भंडारी के केस में. तो एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट गोना हेल्प एनीबडी इन दिस सिचुएशन, जब एनफोर्समेंट टीम इतना अडमेंट हो गया हो. ठीक है, इतना अडमेंट मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि we think nobody is above the law, but ये एनफोर्समेंट टीम जो भी है महाराष्ट्र के, वो सोच रहे हैं nobody is above महाराष्ट्र एनफोर्समेंट. दैट इज द प्रॉब्लम. फिक्स वहां करना है हमको. एंटिसिपेटरी बेल रख के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है. एंटिसिपेटरी बेल वही लेता है जो गिल्टी होता है. दूसरी चीज ये है, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए. क्या नाम है इनका? ट्विंकल, राइट? या, अब सुन लीजिए मेरी बात. अगर हमको सच बोलने के लिए
हमारा मन की बात बोलने के लिए, हमारा वॉइस उठाने के लिए एंटिसिपेटरी बिल लेना है, तो दुनिया भर के जो कोर्ट्स है कम पड़ जाएंगे, दुनिया भर के जो लॉयर्स है कम पड़ जाएंगे। कितने चीज में आप एंटिसिपेटरी बिल ले सकते हो, आप बताओ। It is a precaution. नहीं, I'm not finished yet. I'm not finished yet. I'm not finished yet. Not finished yet. Police jail was rejected by the magistrate. और अगर पुलिस जेल हो जाती तो उनका क्या हाल हो सकता था? हाँ, बिल्कुल मैंने सही है। ये कहा एंटिसिपेटरी बेल पे मैंने बात किया, मैं कोर्ट प्रोसीजर के बारे में बात नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग बैठते हैं, हम अपना क्या बैकग्राउंड है, कौन से लेवल पे हम काम करते हैं, हम वो रिवील नहीं करते हैं। हम आम जनता जैसे आके यहाँ पे बात करते हैं। इट डजंट मीन दैट वी डोंट नो द लॉ. Never judge anybody who sit and talk here. Nobody is here to. No, sorry, ma'am. Somebody has to hit the hammer. That's it. That's me. I don't care about anything. I'm sorry, Varun. I'm really sorry. क्योंकि ये नाइव बन के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज मैं बताती हूँ कि लोग आके बोल रहे हैं, सॉरी सर, लोग आके बोल रहे हैं कि रोड पे उतरो। नो, रोड पे मत जाइए। ये लोग चाहते ही वही है, रोड पे निकले, रोड पे आप निकलो, दंगा फसाद करें। इसीलिए इतने सारे रिलीजियस फाइट्स कराने का देके नहीं हो पाया, तो 1000 केसेस लगा दिया अर्नब के टीम पे, वो भी नहीं हो पाया कुछ भी। फिर भी लोग थोड़ा सा संभल के रह रहे हैं, रोड पे नहीं आ रहे हैं। अभी ये चाहते हैं कि रोड पे लोग निकले। हम किसको होगा? हम लोगों को? नो, रोड पे जो कौन जाता है? यूथ जाती है। वी आर गोना लूज आवर यूथ. Youth is the power of India. I think Rupa, that is bang on. This is the most brilliant advice you can give today. That's the takeaway from today. Don't go on the road. जो भी करना है सोच समझ के करिए, नहीं जाइए रोड पे। मुझे यही बोलने के लिए मैं आई थी, पर ये एंटिसिपेटरी बिल में मेरा थोड़ा दिमाग फट गया। रूपा नहीं, लेकिन वो गलत बात है। मैं इतना सुबह में 4 बजे उठी, ऐसे ही पानी पीने के लिए मैंने देखा कि ये क्या चल रहा है यार। फिर घर पे कॉल किया, सबसे बात किया। मैं यूएस में रहती हूँ। I'm sleeping. I sleep like 9-10 o'clock in the daytime. I'll be up by 9 because I sleep by 3 o'clock in the morning. I can understand. चलता है, फ्रस्ट्रेशन तो होती है, सबको होती है, मैं समझ सकती हूँ। पर जब आप किसी के लिए एडवाइस करते हो, मेक श्योर गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े। Whomever it is, not only Twinkle, not only Karuna, not only Gunjan, not only ma'am, Shailaja ma'am, not only Rupa, can I say something? Rupa, can I say something now? अच्छा इम्पैक्ट होना चाहिए। Rupa, can I say something now? I'm sorry, Rupa, can I? No, Rupa, हाँ, I need to finish this. You know लेकिन Rupa, it has been a difficult day for all of us. Okay? हाँ, और जब हम लोग यहाँ आए थे, it has been a difficult day. ठीक है? And सबको अपना व्यू देने का हक है। और इसको और नहीं, can I finish please? देने का हक है और उन्हें देना चाहिए। As a moderator, it is essential that everybody is heard. क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर सुनना है, सुनकर वो जहां से आ रहे हैं उसको समझकर बोलना है। There is no need to react. But today 100% off, क्योंकि it is a day like that. ठीक है? अगर कोई डिमोटिवेट हुआ है, उनकी मर्जी। तरुण आए थे, इट इज डेफिनेटली, मैं तो डिमोटिवेट नहीं हूं। इट वाज अ वंडरफुल पॉइंट ऑफ व्यू और ये जरूरी है। एंड नो वन नीड्स एनीबॉडीज एंगर, बट वी वुड डेफिनेटली कैरी इट फॉर यू। But right now the anger is coming from you and not from anybody else. We'll carry your anger. It's completely welcome.
We accept it because we know what everybody is going through right now. But don't negate the advice you've given us. Yeah, it is very I'm feeling essential. hot. Yes, Baba. Yeah. मैम, ये नहीं कि मैं एंगर इसलिए हूँ कि मैं देख रही हूँ कि हर जगह पे हर आप लोग चैनल में बहुत बैठ के दूर लोग बैठे बोल रहे हैं हो। कि रोड पे उतरो, इसलिए हाँ। मैं बोल रही, वो चीज मेरे को दिमाग में बहुत गर्म हम लोग कर दिया मेरे को। SSRians है रूपा, कोई रोड पर नहीं उतरेगा। नहीं होना चाहिए मैम, नहीं होना कोई नहीं चाहिए, होगा। बहुत No, see, नुकसान होगा, लंदन देश में को हो, नुकसान see, होगा मैम। May I say हाँ जी। something? Yes, Nosh, सर please. प्लीज। All right. Good morning, good evening, good afternoon to all. We are all grown-ups. We are all matured. The most important thing is you have to have 100% trust in God, faith in the legal system of the central government, and confidence in yourself for unity. And patience is the highest virtue. No blame game will ever work. When we are united, nobody can break us. Yeah. That would be my takeaway, Nosh. We should if we're always united, no stand one will break united. us. Yes. 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 Oh, beautiful. Because in Shantanu, can I unity read is this, the please? strength. Yeah. There's something beautiful, Nosh. I want like to read it out. Shantanu says, if we move democratically, if we peacefully do the silent protest on road, the police will not touch us directly. Even if they request us to move out, we will move out. But our protest will be registered. I think that's a very, very middle place. See, Rupa, these are people from India talking, okay? Yes, Technically, Gunjan is completely right. Her coming out there will not be enough because she will make one SSRian less if she tries to protest more than what she can. We're trying to keep you at rest that we are doing our best. Mumbai is right now not in a position to fly, but the other cities are taking care that the voice is heard. And the farther away you are, the more difficult it is. That's all I can say. Yes, Rupa. मैम, साइलेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं पर at your own risk, क्योंकि ये पॉलिटिकल का जो गूंस होते हैं ना, पॉलिटिकल गूंस होते हैं ना, वो ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे। कब ये लोग निकलेंगे? आम जनता जैसा एक एक करके अंदर आ जाएंगे, सुशांत का भी पोस्टर लगा लेंगे, आ जाएंगे अंदर, मार के चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कौन किसको मारा। आप लोग रेडी हो वो करने के लिए? करिए। सदियों से देखते आए हैं मैम। आज मैंने वीडियो बनाया, मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी आप लोगों का सबका क्या राय है, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। आज किसी का राय नहीं है, आज सिर्फ सुनने आए हैं क्योंकि like I said कि it's gonna be a big disaster ma'am, mark my words, it's gonna be a big disaster, क्योंकि enforcement itself in that corner। आपने देखा वो दुर्गा माता का इसमें क्या हुआ, जो वो बच्चे का जान गई, पूरा उसका सर फट गया। एनफोर्समेंट वही थी, किसने बचाया उसको? कोई नहीं बचाया। वो बोलते कि हमने नहीं गोली चलाई, कोई किसी और ने चलाया। मतलब किसी और को आप तो आने देते हो चलाने के लिए, आपने आने दिया तभी तो आपके चलाए। तो वी कांट ट्रस्ट दिस एनफोर्समेंट एनीवेयर राइट नाउ, सिचुएशन इज लाइक दैट। Yes. If you are going on road, youth, for the youth I'm saying, if you are going on the road, you are responsible for your own life. Thank you. Advice well taken. That's it. No. Yes, but I completely agree. They're going at their own risk. And but I think if they're going it's not worth the risk, ma'am. I think patience is the it's highest not worth the risk. I think no, Rupa, everybody's entitled to their own opinion, and I think
If they hear it, it's good. If they don't hear it, it's there. It's there. See, your advice was sound. Okay, I'm going to go to Karuna now. I think you needed to add something to this, Karuna. You know, Rupa, I saw you yesterday. I don't want you to feel disheartened, my sister. I live just as you, away from our home. I'm fine. But I'm worried for the kids back home. That's it. I understand. That's why I want to lift your spirit up before you start your day at work, because you know why? We want you to come back again and give us more advice, more support, encourage us. And I want to lift you today up with one poem, if I may read it to you. It's by Rabindranath Tagore. It's a Gitanjali by Rabindranath Tagore. So I'll read it. Okay? It says, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Yes. Gitanjali. And I'm really asking my father also to awaken the youth generation all over the world, because it's high time we all need to be awakened and be our authentic selves and be more compassionate with each other. That's the first thing we can do before we can be anything, because everybody's fighting a battle, you know, individual battles, everybody's fighting. So I just wanted to Thank you so much. That was so sweet of you. Thank you so much. And आप लोग गलत मत लीजिए, मैंने आप लोगों को तो पता है मैं बहुत काम हूँ, पर कभी कभी जरूरी हो जाता है। अगर आप सही जगह पे आप वॉइस रेज नहीं करोगे सही पॉइंट पे सही टाइम पे, फिर उस वॉइस का कोई फायदा नहीं, वो मैं समझती हूँ। इसलिए बोलती हूँ। एक और over to Twinkle. एक और बात, Karuna, let Twinkle talk, please. Okay, I'm gonna leave. Yes. No, I'm Rupa, already Rupa? 10 minutes behind. Yeah. Okay. I'm 10 minutes behind already. Sorry. Okay. Yeah. So Thank you. Running late. I'll check on you guys next time. Yes. Bye. Bye. Thank you. You're welcome. Thank you. Yes, Twinkle. Oh dear, there's a noise problem. Yeah, but that was so much pain. I expected this, but I think, you know, sorry, Twinkle, I'll just cut. This poem is my favorite, Karuna, and I work with children. I think sometimes we don't trust them to do the right thing. The millennials are smart people. ये जो नए बच्चे हैं इनको मालूम है क्या करना है, इनको मालूम है प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, हमसे हमारी गलतियों से सीख चुके हैं। और अगर अभी तक ये मूवमेंट इतनी अच्छी तरह चला है क्योंकि इनको मालूम है कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी है, ये मैं मानती हूँ। और मैंने बोला ना कि मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि ये लोग करेंगे और मैं इनको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मेरे टाइप का लड़ाई नहीं अभी नहीं चलता है यहाँ पे। हमारी लड़ाई अभी नहीं है, ये इनकी लड़ाई है, इनका फ्यूचर है। हाँ करना। My mom always used to tell me कि देखो जवान जो है उनके पास स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो आप जाकर लड़ो, पर बड़ों के एक्सपीरियंस से लड़ो, बड़ों के नॉलेज से लड़ो, बड़ों के ज्ञान और उनके इससे लड़ो, बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ जोश है और गर्म खून जैसा कहते हैं, लेकिन अगर उसको हम राइट वे में डायरेक्ट ना करें तो वो हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है। तो बड़ों का अभी जो भी यंग है, it's very good to follow the experience and the guidance of, you know, the elders who've been through this, who fought, you know, for justice. But as youngs, we just need to look up and think before we act. That's like the caution we need to take, I feel. And I believe it's good advice. Second time today. Anybody out there, please. There's some gentlemen here. I'm very sorry, आपके नाम नहीं आ रहे हैं. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, please. हेलो। हाँ जी,
चिंतन मेरा नाम चिंतन है. आई एम हाँ फ्रॉम जी इंडिया. हाँ जी दिस इज एक्चुअली फर्स्ट टाइम फॉर मी कहीं पे लाइव आना. मैंने बहुत ट्राई किया था पहले भी, और हाँ जी वरुण से भी टेलीग्राम पे बात करना ट्राई किया था, पर हो नहीं पाया. एक्चुअली मैं एक ही बात करना चाहता. आज जो हुआ है उसी बारे में मैं एक 10-12 दिन पहले से ही बात करना चाहता था वरुण से, कि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है. अभी माहौल ऐसा है, जो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उनका जो ऐसे रूल कर रहे हैं वो लोग, और सबको ऐसे ही पकड़ के डाल रहे हैं अंदर विदाउट एनी जो उसका जो है वो. तो राइम और मैं यही रीजन कहना चाह बोलते हैं रहा. इसको हाँ हाँ, हाँ, हाँ. तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखो, हम एसएसआर के लिए इतना जस्टिस के लिए इतना फाइट कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे और अभी भी करेंगे. तो मुझे एक ही कहना था कि उनके फैमिली मेंबर के साथ हमारे साथ उनके फैमिली मेंबर को जुड़ना चाहिए अभी. क्योंकि जो उनके बड़े जीजाजी है जो पुलिस में है, जो आईएएस ऑफिसर है, आई थिंक आईपीएस, तो उनके फैमिली का जो प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं. क्योंकि उनके फैमिली वाले कभी भी, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पे भी खुल के आए हैं और कहीं भी कोई भी फैक्ट उन्होंने रिवील किया है, जबकि बहुत कुछ जानते हैं वो लोग. जो जिस दिन से ये हुआ, आफ्टर दिशा सालियन केस, उनकी सिस्टर वहां पे आ गई थी, तो कुछ ना कुछ तो 100% एसएसआर ने बताया ही होगा. ऐसा नहीं मैं मान सकता कि कहीं कहीं पे कुछ भी उसकी सिस्टर को नहीं पता है कोई भी चीज. ऐसा मैं नहीं मान सकता है. ठीक है. और जाते जाते विभोर ने भी ऐसा 2-3 बातें ऐसे कही थी. नो डाउट वो फैमिली के ऊपर जो इंटरनल डिस्प्यूट थे उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था, भले ही वो सच बात हो या गलत बात हो. पर जो उसने बताया था कि ये फैमिली वालों को पता था और नेगोशिएशन भी चल रहा था, ऐसा कुछ था वहाँ पे. तो मैं अभी हमको नहीं पता कि वो क्या था, पर थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा उनको. क्योंकि जब ये स्मिता जी भी आए थे फर्स्ट टाइम रिपब्लिक पे, तो उन्होंने बताया था कि मीतू से बताया था कि अब लोग ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब कि दिशा सालियन का केस हुआ तब. तो इतना सब कुछ बता सकता है बंदा, तो वो नाम रिवील नहीं कर सकता है जिसके लिए उसको डर है. तो ये मानने में, मेरे मानने में नहीं आता है, भले बात अच्छा सच है कि नहीं है. और दूसरी बात, जब जनवरी महीने में ये कंप्लेन किया था, एक मैसेज पे कंप्लेन किया था कि ये हमारा जो ये लड़का है गलत संगत में है, आप जरा ध्यान रखो, ऐसा मैसेज पे कंप्लेन हुआ था. तो अभी वो देख के, खाली एक ये गलत संगत में है वो देख के आपने कंप्लेन कर दिया, और जब आपका बेटा या आपका भाई बता रहा है कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मेरी जान का खतरा है, तब आपने क्यों एक्शन नहीं लिया कुछ भी? या लिया था तो भी आप बता क्यों नहीं रहे हैं कुछ? हाँ जी चिंतन दो चीजें इसमें हाँ एक तो है कि जैसे कि मैं इट्स कैंडिड ये कॉन्वर्सेशन है तो यहाँ तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे ये मैं क्लियरली बोलती हूँ हाँ, क्योंकि मैं मैं आंसर नहीं मॉडरेट मांग कर रहा हूँ, रही हूँ मैं खाली ये हाँ पूछ नहीं रहा हूँ नहीं कि नहीं नहीं अगर अब लेकिन क्वेश्चंस है लेकिन कैन आई कम अगेन इसमें दो चीजें हैं जब मैं एसएसआर के बारे में और एसएसआर के जस्टिस के लिए उतरी थी हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे को किसी की मदद चाहिए कि नहीं अभी भी हाँ, किसी को मैं भी नहीं पता था. आई और एम एडिंग माई ये वैल्यू नहीं नहीं कैन आई से हाँ, दैट हाँ, कोई अगर आप हो या ना हो मैं लड़ूंगी हम्म, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करूंगी अगर ऐसे करके हम्म, चलेंगे ना तो आपको हम्म, ये फाइट ज्यादा अच्छी रहेगी राइट, अगर यू आर राइट. कहीं भी ना कि ये क्यों नहीं आ रहे वो क्यों नहीं आ रहे ये आंसर्स ये हमारा काम नहीं है से देयर राइट. इज इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन हमें आंसर्स मिले ना मिले क्या हम फिर भी लड़ेंगे कि नहीं ये नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली अभी ये हाँ, क्वेश्चन तक आ चुका है क्योंकि ना हाँ, कहीं भी बोलो मैं आपकी फैमिली में इंटरफियर नहीं करूंगी आप मेरे हाँ, फैमिली में इंटरफियर नहीं कर सकते लड़ाई में हो राइट, या ना हो हाँ राइट. अगर नहीं है तो नहीं है क्या क्या ठीक है. ये लड़ाई कम होगी पता नहीं लेकिन मैं तो लड़ूंगी अगर मैं से शुरू राइट. करेंगे ना तो हम बन जाएगा नहीं, यू आर अगर राइट हम एब्सोल्युटली. पर हाँ जो जी यहाँ पे क्वेश्चन जो आज उठा है कि ये डर सबको लग रहा है अभी कि एक एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है कि ये गलत तरीके से उसको लेके गए. सबको डर है अंदर, भले सब कोई बोल नहीं रहा है या कोई बताना नहीं चाहता है, पर सबको एक जगह दिल के एक कोने में तो डर है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो
इंडिया में जो है पर्टिकुलर उनके लिए तो ये बात मैं 100% बोल सकता हूँ कि उनको डर है, भले वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, सब कुछ है। मैं भी आज फॉलो कर रहा हूँ एसएसआर के वैल्यूज, एसएसआर को सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट भी कर रहा हूँ उनके। जब से ये हुआ है तब से मैं भी उसके पीछे लगा हूँ, मेरा बिजनेस मैं साइडलाइन कर दिया है, सब कुछ है, पर एक डर तो लगा रहे। वी आर फैमिली मेंबर्स एक्चुअली, फैमिली पीपल, तो एक डर तो सबको लगा रहता है। पॉइंट तो आई विल ये कैरी, टाइम है, दिस इज ओपन फॉर कॉन्वर्सेशन, कि अभी जो ये डर लग पॉइंट रहा है। है, हाँ जी, हाँ, एक पॉइंट है इसको कि आई थिंक जिस आई ओपन तरह, इट, सॉरी हाँ, सर। जिस तरह उनके जीजा जी ने सबको प्रोटेक्शन दिया हुआ है उनकी फैमिली में, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं, के वहां ऊपर मत कोई बात जाइए, वहां नहीं है मत ये। जाइए, नहीं वहां नहीं मत नहीं, वहां जाइए, जा नहीं रहा हूँ, हाँ जी, मैं जा नहीं रहा हूँ। तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि उतना उतना केयर भी, अगर कोई आपके ये आपके फैमिली मेंबर के लिए कुछ आगे आके कुछ कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसके फैमिली मेंबर को भी उतना वो दिखाना चाहिए कि जितना लोग मेरे लिए कर रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखूं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में है और ये मुझे एक आईपीएस ऑफिसर है, तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी हमको भी होना चाहिए। चिंतित दो, अगर अगर आप बोलते कि अभी आम इंसान डर रहा है इस फाइट में रहने के लिए, हाँ, हाँ, मैं क्योंकि वहां उनके तक फैमिली इस मेंबर ने कोई कॉन्वर्सेशन को आगे ले आके जाऊंगी। नहीं बोला है। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, हम लोग फैमिली हैं, ये हमारी अलग फैमिली है, और ये यस अलग लड़ाई यस। है। एंड वो लड़ाई, वो लीगली उनको अथॉरिटी है लड़ने की, वो लोग लीगली लड़ रहे हैं, हम लोग हाँ, लीगली उनको नहीं लड़ ब्लेम रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ मैं, मेरा कोई नहीं, मैं बात का बिल्कुल गलत नहीं, मतलब नहीं में नहीं, निकाले, आप मैं नहीं किसी कर को रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, हाँ, नहीं आप नहीं कर रहे हो, मेरे को कभी, मैंने कभी वो ब्लेम नहीं सुना, नहीं तो मैं आपको पहले ही रोक देती। बट हाँ, हाँ, मेरा कहने का क्या मतलब है कि आप सही बोल रहे हो कि ये ये लड़ाई, डर तो इसमें थोड़ा डर लग रहा है सबको, आज ज्यादा डर हाँ, लग रहा है, और ये कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है अभी, इसलिए मैं राइट इसको आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि दिनेश है, विकास है, एंड करुणा इज देयर, पूजा, ठीक, कोई भी कुछ बोल सकता है, सो इट वुड बी नाइस। पूजा कुछ बोलना चाहती हैं इसके बारे में? हाँ मैं बोलिए। कहना चाहती हूँ, जो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, यस, तो उनकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन यही है कि वो चुप है। आप चुप रहेंगे तो आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे ही आप बोलोगे वैसे ही आपको भी अटैक हो जाएगा। तो आपकी मैडम, सबसे बड़ी क्या है प्रोटेक्शन कि ये है कि एक आप चुप रहे, कुछ मत इतना बोलिए। चिंतन इतना सुन कुछ, लीजिए, सुन लीजिए, सुन हाँ लीजिए। हाँ, तो वो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन ये है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो उनपे अटैक किस बात का होगा फिर? समझे आप इस नहीं नहीं, बात को लेकिन कि नहीं नहीं, बट पूजा, आप जो आंसर कर रहे हैं वो आंसर ही नहीं था, कि अभी जो हमको डर लग रहा है, अभी जो हम डर नहीं, रहे हैं उन्होंने ना, कहा ना कि वो फैमिली को प्रोटेक्ट किस तरीके से नहीं, कर रहे हैं, भाई हमें मैंने भी बोला मिले कि उस वो तरीके से। कॉन्वर्जेशन में जाएंगे ही All नहीं, right. क्योंकि वो May I say कॉन्वर्जेशन हमारी something? है ही नहीं। यस नौश, प्लीज। All right. May I say something? Okay. यस नौश। What I would like to talk about the family is whatever Vibor may have said or not. The legal people of the family have told them not to give any verdict or any comments. That is why they are quiet. okay, So you have to respect the legal system. The legal system, right, the vakil, the advocate has suggested not to make any points or comments. यस, Otherwise, even if they are wrong also or right also, they will be spoiling the case and justice will not come to Sushant. So we have to okay. respect this stand. थैंक यू We नौश। cannot just blame game with everyone. यस, No, ये नो ब्लेम गेम नहीं है, नौश, मैं पहले अगेन क्लियर कर अगेन रहा हूँ। नहीं, We चिंतन, have to be अगेन आई वुड wise लाइक टू enough. से, okay, Nosh, I was very clear that it was not a blame game, and I just said, let's take this conversation to the fact that, are we getting scared after today? Can we keep that? If anybody wants to answer No, this question, I would we like can to take add this here also. conversation. Yes, 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 please. Yes, I would please. like to add here also. Yes, please. What I would like to say is when आप जब ईश्वर की भक्ति या आराधना करते हो, if you are scared, are you going to do the bhakti or aradhana or japa properly? No. So you have to make yourself well centered, patient, patience and patience, without which you are not going to reach to God, without which God is not going to send you help.
and without which the desired outcome will not come. So please stop being restless, stop being scared. In the battlefield, you are never to be scared. You have to be fearless warrior. I'll just say that अगर इतनी छलांग my लगा दी है तो हाँ, let me finish. Sorry. There is one thing about Lord Shri Krishna. Lord Shri Krishna is also known by his name Ranchod Das. If you have heard of this. Ranchod Das means you have to take 2 steps backwards. You have to take 2 steps backward to go 10 steps ahead. If you can't take 2 steps backward, you cannot go 10 steps ahead. So we need to be wise, we need to be collected, calm and cool. We cannot just rush. We cannot say 4 months have passed or 5 months. Jia Khan's mother is battling for 7 years. Can we believe that? Yes or no? Jia Khan's mother is fighting for 7 long years with no results. So we need to wait. We need to be collective. We need to be collected, calculated, and we need to be patient. Very important. And not fear at all. हाँ, जरूरत पड़ी तो हम लोग रास्ते पे भी उतरेंगे. Yes. But time अभी ठीक नहीं. I'm sorry, Gunjan, just go to Twinkle. She had raised her hand. Yeah, Twinkle, just don't answer the family question. I think it's been answered. Yeah, please. No audio. Yeah. As you mentioned, fear. I think what people need to do, what we need to do, is to pause and think rationally. Okay, not just jump into a very impulsive decision or impulsively doing something or saying something, what comes in your mind. So like-minded people should come together, think rationally, speak out your thoughts, and then come to a solution. You mentioned don't say solution, but then come to some sort of conclusion. These are your thoughts. These are your thoughts. It's completely a good one. Yes. No. So rational thinking is more important than to make a impulsive जो मन में आ गया बोल दिया कर दिया लिख दिया प्लेटफॉर्म पे जाके बोल दिया. No. Think rationally, speak also rationally, and see what the circumstances and your consequences will be from your actions. I think that's what people need to think about. और चंदन, मैं आपको कल बताना कल हमारी बात हो रही थी और ये कॉन्वर्सेशन में ऐसी बात निकली कि बैलेंस करके भी थोड़ा चलना है, अपनी प्राइवेट लाइफ भी है और इसको दोनों को इफेक्ट नहीं करने देना है और ऐसा रहना है कि आपको कभी भी पता होना चाहिए कि हम सब साथ में हैं. या सोशल मीडिया है, ग्रुप्स हैं और कोई भी ग्रुप हो, SSRians are SSRians and we are not fighting for justice for SSR. We are fighting for democracy. क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो, ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर के लिए जरूरी है, लेकिन लड़ाई लंबी है तो मेजर करके लड़ेंगे, इसे डरना नहीं चाहिए. लेकिन कुछ वॉरियर्स हैं जो आगे बोलेंगे तो डरेंगे नहीं, उनकी भी जीत होगी. नौश, आई वुड लाइक टू गो टू अदर्स प्लीज. मैम एक मिनट, हम नहीं पूछा. हाँ जी. नहीं मैम, हम बस जा ही रहे हैं तो हम बस सबको गुड नाइट बोलना चाहते थे. थैंक यू. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. सो मच. आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और खासकर गुंजन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही ब्रेव गर्ल हो आप और बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के. Go ahead like this. Yes. Okay, good night all. Thank you. Thank you. Dinesh, Vikas, over to you guys. Just who would like to do? Vikas or Dinesh? Dinesh, please. Hi, ma'am. Dinesh, please. Yeah, please. This is my first time actually. Yeah. Everyone can hear? Yes. Yes. Okay. Okay. I want to take your all blessings because this is my first time.
so I am not so vocal on this, but I am watching all this Varun shows and everything from the long time, like after SSR case. So over to you guys. Just the voice is echoing actually. Yes, give Someone. Someone is not muted. Actually. Someone's not muted. We're getting a YouTube conversation. There's a Slack coming. Okay. I want to take your all blessings because who is it? So I am not so. This is me actually. I am talking. You need to like pause your YouTube. Your YouTube is on. Yeah, your YouTube is working. Yeah. Someone is not. Sorry, I just checked. Okay, Vikas, over to you till he comes back. Hello everyone. Hello Vikas. Hello Vikas. हाय मैम, मैं मॉर्निंग में भी आया था और एक्चुअली अभी डिस्कशन हो रहा था, एक मैम थी वो बोल रही थी प्रोटेस्ट के बारे में, तो मैंने सोचा अपना मैं बात रखूं। ठीक है, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब है कि प्रोटेस्ट मतलब कहाँ कहाँ हम अगर कंप्रोमाइज करें लाइफ को, कहाँ कहाँ करें। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अभी दिल्ली में हूँ। ठीक है, मैं गुड़गांव मेरा ऑफिस है, था पहले। ठीक है, तो मैं डेली कम्यूट करता था बाई मेट्रो। ठीक है, अब उसमें क्या है अगर आप जब इंटर करते हो तो चेकिंग होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉलो करोगे रूल को। ठीक है, आप लाइन में लगोगे, फिर वन बाय वन आप जाओगे। अगर कोई आपके सामने आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसको जाने दोगे या उसको बोलोगे, समझाओगे। ठीक है, अगर मैं समझाता तो मेरे से लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, तो उस समय मैं चुप नहीं रह सकता, मैं बाई नेचर मैं एग्रेसिव हूँ। ठीक है, मैं चुप नहीं रह सकता वहां पे। ठीक है, मैं बोलूंगा। तो मेरे कहने का मतलब जो मैंने मॉर्निंग में बोला था कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम डंडा लेके निकल जाएं। प्रोटेस्ट अभी एक जैसे आपने एक पढ़ा था, किसी का ट्वीट पढ़ा था, शायद मैसेज था। ठीक है, हाँ, तो हम प्रोटेस्ट उस तरीके से कर सकते हैं। और जहां तक है कि हार्म कोई हमें करेगा, वो तो ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, मतलब एक एग्जांपल लीजिए, मैं मतलब पॉलिटिकल एग्जांपल देता हूँ उस चीज का। ठीक है, अगर सब बोलते हैं कि पॉलिटिशियन अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हमारा कंट्री कैसे डेवलप करेगा, मेंटालिटी चेंज कैसे करेगा। अगर यूथ पॉलिटिक्स में आए तो चेंज हो सकता है ना। हम ट्राई नहीं करेंगे, हमारे गार्जियन अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कि हमें देखना पड़ेगा, हम क्यों नहीं कर सकते हैं वो चीज, हम करना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए वो चीजें। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हमें अगर बेसिक लेवल का, अगर सीधा पॉलिटिक्स में नहीं आए, बेसिक लेवल का ही इलेक्शन होता है वो लड़ें। ठीक है, मतलब मैनेज करना चाहिए उसको, कैसे मैनेज करेंगे, अगर फैमिली लाइफ है उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो सब चीज सोचते हुए हमें ये सब चीज स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, आप एक जगह अगर बैठ जाएंगे, बैठ के फिर डिसीजन मेकिंग करते रहेंगे या किसी को जज करेंगे। ठीक है, तो जज मतलब आप घर में बैठ के जज कर रहे हैं किसी को, आपने कोई लाइव देखा ही नहीं है। जैसे मैं एक यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जो प्रॉब्लम है, मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ इंडिया में जाओ आप तो वहाँ पे साउथ इंडियन को प्रॉब्लम है, साउथ इंडिया जाओ वहाँ नॉर्थ इंडियन को प्रॉब्लम है, अब मुंबई जाओ वहाँ भी प्रॉब्लम है। मतलब आप कहीं शांति से रह नहीं सकते, कितना आप अपने आप से कंप्रोमाइज करके रहोगे। मतलब आपकी लाइफ, अगर मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे अगर जॉब मिल जाए, मैं वहीं जाके शिफ्ट हो जाऊं। अभी मैं हैदराबाद शिफ्ट होने वाला हूँ, एक्चुअली आप हैदराबाद की हैं मुझे पता है। ठीक है, तो अभी कोविड में मैंने जॉब चेंज किया है, तो अच्छी हाँ, जगह तो हैदराबाद। हाँ मैंने सुना है सब। हाँ,
तो मैं वही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम सब जगह हैं, आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ेगा वो चीजें, ठीक है। नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल दिए मैंने। विकास, सुनना जरूरी है। और जैसे आप बात कर रहे हो, मेरे दिमाग में सोच आ रही है, तो इट्स गुड, अच्छा लगता है कि कोई आके ऐसे अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू दे, क्योंकि जरूरी है सुनना। दिस इज व्हाट आई अभी मीन, कुछ ट्विंकल, सो अभी मेनी कुछ दिनों की नाइस थिंग्स अभी कम अप, यू नो। हाँ, या अभी कुछ दिनों की बात है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ही बोला, फैमिली में बोला कि मैं जा रहा हूँ, जो बेसिक लेवल का इलेक्शन होता है ना मुखिया का, मैं जाता हूँ, मैं वो करूंगा, ठीक है। डेवलपमेंट कहीं से तो शुरू हो, ठीक है। हम उन चीजों के लिए लड़ते रहते हैं, हमारा बेसिक जो हमारे विलेज में है वहाँ पे हमारे बेसिक चीजें नहीं मिलती हैं, मतलब कोई काम करने वाला नहीं जाता है। अगर हम पढ़े लिखे हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, हमें लगता है कि हम ऑनेस्ट हैं, ठीक है। कोशिश तो हम करें, कोशिश करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर वो गिल्टी हमें पूरी लाइफ रहेगी, ठीक है। ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, 40 के आसपास हैं, उसके बाद पता चलेगा कि 50-60 के हो गए, कुछ कर नहीं पाएंगे फिर। तो सोचना तो हमें पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा फिर। हम दूसरे के भरोसे तो हम छोड़ नहीं सकते उन चीजों को कि हम सोचेंगे मेरा बच्चा आके वो करेगा। विकास, आई थिंक सोचने की बात नहीं है, कह रहे हैं कि सोच समझ के करो, बस यही हाँ बात बोली जा रही है। क्योंकि हाँ अभी ना, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी एसएसआरियंस आपके साथ जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है। तो अगर ऐसे रख कर चलेंगे तो लंबी लड़ाई कर सकते हाँ। हैं हम। वो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब ज्वाइन किया था, तो मैंने सॉरी, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ क्या मैं, वरुण। कपूर, कपूर गौरव वरुण। आई थिंक। हाँ, गौरव वरुण, कपूर। वरुण, सॉरी, वरुण। वरुण। ओके। तो हाँ जी, मैंने वरुण को ये बात पहली बार ही बोला था मैंने, ठीक है, हाँ जी। कि हाँ, कि ये लंबी चलेगी, ये छोटे मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में तो इसका सॉल्व होना ये पॉसिबल नहीं है। और अभी जो मेरा कंक्लूजन आया है, मतलब मुझे जो समझ आया है, सिनारियो मैंने देखा, सब चीज और जगह का जो केसेस है वो थोड़ा स्टडी किया, तो मुझे समझ आया, मतलब ये मतलब अच्छा नहीं है कि अगर मैं बोलूंगा कि ये केस सॉल्व नहीं होने वाला है या हमें कोई पॉजिटिव चीज इससे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन मेरा जो कंक्लूजन है वही आ रहा है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, हम कुछ बेहतर कर सकते हैं और चीजों के लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सुशांत के बारे में मेरा कोई पॉजिटिव अभी थिंकिंग नहीं आ रहा है कि मुझे कोई जस्टिस मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमको आकर सुनिए, हमारे पास बहुत पॉजिटिव है। अब मैं विभू से बात करना चाहूंगी, प्लीज। विभू। श्योर श्योर। हाय, हाँ एकदम आई सपोर्ट। इससे अगर आपको पॉजिटिविटी मिलती है कि आप एकदम जो बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो अपनी नौकरी तो नहीं गई, जो कर रहे थे वो हम कर ही रहे हैं। और ऐसे ही, और हमें अगर थोड़ा भी एक्टिव देखा होगा हमारे साथ वालों ने, और फिर हमें वापस जाते हुए देखेंगे ना जब कि हार के वापस आ गया, तो कुछ लोग शायद इस पे भी सोच लेंगे कि वापस आने के बाद क्या आंसर रहेगा। कि जैसे फादर या मदर नहीं कहते थे, हो गया आगे घूम के, आना तो घर ही पड़ा। तो ये भी आंसर हमें तो पहले से तैयार रहना चाहिए था कि अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। क्योंकि जब पहला मंगल पांडे ने मना किया था जब पहली बार, उसने भी तो सोचा ही होगा कि 2-3 महीने में तो आजादी ले ही लेंगे, टाइम तो उनको भी लग गया था, ठीक है। लेकिन उन वो होता क्या है ना, आप जब कहीं इग्नाइट करते हो, एक चिंगारी लगाते हो कि ये अच्छाई के लिए मैंने किया था, वो कई बार सुलगते रहती है, उसी समय कभी भी जस्टिफाई नहीं होगा। लेकिन आज के बाद सुशांत नहीं होगा, ये भी कंफर्म करना ज्यादा जरूरी हो गया था। तो मैं ये नहीं कर रहा, क्योंकि अभी सब कोई बार बार पूछ रहे थे, कोई रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आप देख रहे होगे, जैसे विभोर कहाँ है, या फिर अर्नब को क्यों नहीं बेल मिली। क्वेश्चंस, हर चीज में क्वेश्चन मार्क बनाना, वो तो स्वर्ग की सीढ़ी में भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, मिलनी वो भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन बैक का आंसर नहीं दिया, तो मेरा सीधा हिसाब ये रहता है, हमें नहीं पता है, और पता है तो नहीं बताया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। और आप जैसे इसको मैं फिर वही है, लोग निगेटिव लेते हैं कि साफ साफ बोल के अगर मैं चला जाऊं, तो इसलिए मैं थोड़ा वर्ड्स मिंगल करना चाह रहा हूं। हमें सुशांत केस में इतनी प्रॉब्लम क्यों देखने मिल रही है? क्योंकि आपने कभी देखा होगा, आप किसी जानवर को या बिल्ली को आप ऐसे दौड़ाओ बहुत
अच्छा गेम कर लेगी, इधर से भाग के उधर, लेकिन आप जिस दिन कॉर्नर कर दोगे ना उसको, फिर आप उसका सबसे फेरोसियस रूप देखोगे, सबसे गुस्से में, मारने को तैयार। तो अभी अगर आप आज का जो सिचुएशन देख रहे हो, सिस्टम जो कर रहा है महाराष्ट्र का, वो क्यों इतना एग्रेसिव हो गया है? बिकॉज दे आर कॉर्नर्ड। वो एक एक तरफ दीवार की तरफ आ गए हैं, उनको बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपना फुल पावर लगा देंगे कि मैं कैसे भी नाखून मारूं, हाथ मारूं मुंह पे, कैसे भी निकल जाऊं यहाँ से। तो उनको वो छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हैं जो उनकी गलतियां होते जा रही हैं। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ये उतने एग्रेसिव आज इसलिए हैं, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं। मेरे लिए वो मोटिवेशन है कि अब इनके पास और कोई पैंतरा बचा नहीं है, ये अपने सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं। जिससे क्या होगा ना, आगे जाके आप खुद डिरेल हो जाएंगे, आपकी पार्टी टूटने लगेगी, आपके भरोसे वाले लोग आपसे दूर होने लगेंगे कि इतने नीचे लेवल के लिए हमने सोचा नहीं था कि पार्टी ये करेगी। कुछ लोग होंगे जो अलग हो जाएंगे कि ये कहीं पर्सनल रीजन से तो आप नहीं कर रहे हो। देन क्वेश्चंस विल बी ऑन देम कि आपने ऐसी हरकत क्यों की। क्योंकि आज आप न्यूज चैनल में भी देख लो, कितने न्यूज चैनल्स ने बोला अर्नब के बारे में। अर्नब का चैनल तो बोल ही रहा है। आज सिर्फ मैंने जी न्यूज को देखा बोलते हुए, और वो भी पूरा 1 घंटा, चाहता तो 5 मिनट में जा सकता था। सुधीर चौधरी ने पूरा 1 घंटा समझाया, बिकॉज ही हैज गोन थ्रू इट, और उस समय उसकी मदद किसी ने नहीं की थी। बीइंग ए राइवल चैनल ऑल्सो, उन्होंने आज Rajat पूरी Sharma मदद की, also said. ठीक है। और रजत शर्मा को बोलना पड़ गया, हाँ. बिकॉज एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ, career. अगर वो नहीं बोलेंगे ना तो हिस्ट्री में हो जाता, गोल्डन और ब्लैक सबसे लिख दिया जाता कि जाते जाते भी ये ना प्रोफेशनल को ऊपर रख गए, पर्सनल को नीचे, मतलब पर्सनल ऊपर रख गए और प्रोफेशनलिज्म भूल गए। नाम ले रहे हो सब लोग, तुम लोग। हाँ, नहीं वो नहीं, जो उन्होंने सही है, इंटरव्यू जो दिया, मीडिया में इंटरव्यू वही दिया हुआ बोल है। रहे हैं ना, और ऐसे और बोल रहे हैं। सही बात। और इस पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज वाले हैं वो। अगर ये उनका सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, आ गया, मीडिया पे आ हम गया। उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, हम उन्हीं के लिए तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि इन्होंने ये अच्छा किया। और भी 2-3 चैनल है, मैं 1 घंटे तक चैनल घुमाता रहा, बट उनको यूएस प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है, हम बोले हाँ भाई वही तो चलाएगा मुंबई और बिहार को। दिखाओ, दिन भर दिखाओ तुम। हम वेट कर रहे हैं कि बिडेन जीत जाए और वहां से बोले कि मुंबई पुलिस यू कैन नॉट डू दिस, और मैं देखता हूँ क्या होता है। आप दिन 24 घंटे दिखाओ इसको, क्योंकि ये प्रायोरिटी थी बहुत ही स्टेज्ड को, मतलब थिएट्रिक्स पहले से सेट था। Lutyens सुबह media. सुबह 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 एक वीडियो आएगा लेडीज का जिनके अगेंस्ट केस है, और केस क्लोज हो चुका है। सॉरी, जिनका ये केस था, जिनके हस्बैंड ने सुसाइड किया था, उनका एक वीडियो आया जिसमें वो पढ़ के बोल रही हैं। ठीक है, पहला तो मेरा दिमाग वहां से घुमा कि सारे अगेंस्ट चैनल या जो मिले हुए चैनल हैं और पोस्ट हैं और बहुत सारे आईटी सेल होते हैं, उनके पास ये वीडियो थी, सुबह डाल दी गई। 15-20 मिनट बाद ये सुबह में अर्नब वाला केस हो गया। अर्नब ने भी, आप मुझे ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा कि अच्छा उसने मास्क भी पहना हुआ था, लाइव भी ऑन था, तो यानी अर्नब को तो पता था। ठीक है, गेट पे खटखटाया गया होगा, अर्नब ने देखा कि अब जाना ही है, तो अर्नब ने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया, तैयार भी हो गया। फिर एक केस ये भी आया कि वीडियो में देखो कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। आई एम वेरी हैप्पी, फुल रिक्वेस्ट से तो वो विभोर को भी ले गए थे, साहिल को भी बड़े रिक्वेस्ट से प्लेन से ले गए थे भाई साहब, पैसा देके भाई प्लेन ले गए थे। इससे ज्यादा इज्जत कभी मिली है किसी को? और उसके बाद क्या किया, 1 सप्ताह तक उस आदमी का पता ही नहीं चल रहा है, 10-10 दिन 15 दिन तक पता नहीं चल रहा है। तो आपको बस एक बार पकड़ लेंगे, उसके बाद आप नहीं बोल सकते हैं। आज जो इतनी देर तक लड़ाई हुई, फिर मैंने सुना कि उनको रिमाइंड, कल फिर से पिटीशन हुआ है फाइल, बट रात भर में 5 मिनट चाहिए होता है आपको तोड़ने के लिए उनके लॉ और उनके जो हथकंडे होते हैं। तो मैं इसको कहीं भी वो नहीं देख रहा हूँ। और एक और पॉइंट था, हाँ, रोड पे उतरना चाहिए, रोड पे उतरना चाहिए। तो ब्लैक लाइव मैटर भी हमने देखा कि लास्टली रोड पे आना पड़ा। इतना एडवांस है यूएसए, सब कुछ समझते हैं, उनसे ज्यादा डिजिटल प्रोटेस्ट कोई नहीं कर सकता था। एक लेवल पे आके उनको ये दिखा जिसके लिए वो हुआ था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जॉन या कोई नाम था, हाँ, जो उनके गर्दन पे वो घुटना रखा हुआ था एक आदमी। लड़ाई उस दिन नहीं हुई, उसके अगले दिन भी नहीं हुई, 3 दिन लगा। 3 दिन के बाद हुआ क्या, जैसे सुशांत का केस से लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, सेम चीज लोग जो वहां खड़े थे वो उस समय भी लड़ सकते थे, लेकिन एक होता है ना, ग्रैस्प नहीं कर पा रहे कि ऐसा हो भी सकता है क्या। और जब ये कलेक्टिव थॉट आ जाता है सब में कि ऐसा अगर हो सकता है, तो ये मल्टीप्लाई हर दिन हो सकता है। फिर एक एक पास हो जाए, जैसे अगर आज अर्नब गलत हो मान लीजिए,
वो केस में हार जाएगा, उसको जेल भी हो जाएगी। बट अगर आज ये पास कर दिया गया ना कि अच्छा एक पुलिस या एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसे किसी को उठा सकती है, क्या हालत होगी एक एक रिपोर्टर की। कल से कोई सच नहीं बोलने वाला। कौन चाहता है सुबह सुबह उठा के ले जाएगा। तो इसको फेल करने के लिए हम लोग का सपोर्ट चाहिए। रोड पे उतरना है। कल 2-3 एड्रेसेस हमारे पास आए हुए हैं, वी कैन शेयर कि मुंबई में कहाँ पे करना है आपको, बेंगलोर में कहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कलकत्ता में कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपको बहुत मन है, शौक है, फैमिली को बोल के जरूर जाइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहे हैं आपको करने के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कौन लेगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया कि दुर्गा पूजा में जो लोग ऐसे हाथ नीचे करके बच रहे थे, उन पे तो गोली चला दी। तो यहाँ तो वो ही इसलिए करना चाह रहे कि एक बार हुलिगन जैसा हो जाए और फिर हमें पूरी आज़ादी मिल जाए कि हम कर्फ्यू लगा दें। उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो एक होता है ना, जब सामने पागल ही हो गया हो, कोई दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ा सा साइड लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वाला वो सिचुएशन है, दे आर कॉर्नर्ड। आपको पता भी नहीं है। यहाँ लोग उल्टा सोच रहे हैं कि हम पे प्रेशर है। एक्चुअली सिस्टम कॉर्नर्ड हो गई है कि जिसको देखो हैशटैग बना के मेरे ऊपर कुछ भी बोल सकता है। उन्होंने हैशटैग कंट्रोल करना चाहा तो भी नहीं हो पाया। एक दिन के अंदर वो भी फेल होने लगा, क्योंकि ट्विटर भी कितना कंट्रोल कर सकता है। आप हर दिन हैशटैग चेंज हो रहा है। उन्होंने पता नहीं पूरी लिस्ट ली, 300-400 हैशटैग्स एट वंस ब्लॉक कर दिए। वो पूरी ट्रेंडिंग लिस्ट से गायब। फिर भी 2-3 घंटे बाद अर्नब का नाम आने लगा, फिर 2-3 घंटे बाद वी आर विथ अर्नब आने लगा। बिकॉज आप सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं जो कि पहले से स्ट्रक्चर्ड है, एंड वी आर नॉट स्ट्रक्चर्ड। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आज जो गुस्सा है मशाले। हाँ मैडम बोलिए, मैं फिर ऐड करता हूँ। Yeah, that is what I'm saying. What you're talking about, collective thinking, that needs to come from individuals, professionals in their fields, right? हम लोग तो डिस्कशन एक कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स लेने वाले लोग हैं, they are lawyers, advocates, politicians who are like-minded, who wants to support SSR. They should come on a common platform, talk about it, discuss about it, and come to a proper conclusion or solution as to what needs to be done. Because we alone can't fight the system. Because यहाँ पे मैं I am आप जो very कह blunt. रहे बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, जंतर मंतर पे जाओ। जंतर मंतर पे आज कितने मशाल लेके चले गए। जेएनयू वाला ने पर प्रोटेस्ट किया, क्या कुछ बोल दिया, या मुर्दाबाद ये मुर्दाबाद ये मुर्दाबाद। What is going to happen? Nothing. Unless intellectuals, literate people come together, discuss, come to an amicable solution, a reasonable solution which can challenge these people. Again, Twinkle, again, this is where I would again say family can do what they want, intellectuals can do what they want. No, I'm just saying, I know, I'm going down. Intellectuals can do what they want. We are here to see what we can do. ठीक है, अगर उनको करना है, उन्होंने कर दिया होता, नहीं किया, nobody's forcing them. उन लोग को साथ में लाने की जरूरत है. We can bring them on a common platform. Please do it tomorrow, Twinkle. That's your job now. बस की बात होती तो मैं कब की कर रही थी. Exactly. You know, जिसको you put the point out there. अगर होगा तो होगा. If someone gets the point, हाँ. Individually you can't do anything. People of intellectual minds coming on a common platform and discussing this. Now we see Style Rock, we see Forgot Films, we see Varun Kapoor. They are all platform providers. So platform providers, when you bring intellectuals together who are like-minded, who support SSR, who support the right democracy in our country, they should come up with something. हम लोग तो discuss करते ही रहेंगे. Yeah, but it's come 3 times, so I think point is really taken. I hope somebody out there hears it. Yes, they have to bring them together. I mention names. See, no. You mentioned names, Baba. But I'm looking for that individual who can bring them together. Because right now, I don't think any of the 8 of us are willing to take that job up. Because we feel we're not up to it. So let's see who's going to do it. Because that's the whole thing. Yeah. Everybody has a different experience. हर किसी का अलग है बाबा, जरूरी बहुत चीजें हैं, बट करना जरूरी है. I can make a campaign structure, लेकिन रोड पे उतरने वाले अलग होते हैं. रोड पे उतरने की बात नहीं कर रही हूँ मैं. नहीं उतरो. मैं कह रहा हूँ अगर उतर जाते हैं, that is what he means. वो आज के पहले अगर रोड पे नहीं उतरे हैं, we are not saying
उन लोगों को हम साफ साफ मना कर रहे हैं कि विदाउट स्ट्रक्चर जाना ही मत, बिकॉज यू डोंट नो जो ये करते हैं उनको पहले से पता होता है कि हम पे कौन सी धारा लगेगी, कौन सी आईपीसी एक्ट लगेगी एंड कितने दिन में बेल होगी. दे आर रेडी विद दैट. Yeah, all those who came to protest against Arnab were arrested immediately, right? About 15-20 people were put in the van straight away. वही जब जंतर मंतर पे लोग गए हैं, लोग आए थे मशाल लेके, कुछ नहीं हुआ, do anything because so they many were people were prepared. there. They got prepared कि क्या हो सकता है एंड वी आर रेडी. बेल कितने देर में हो जाएगी, हमारा लीडर का कनेक्शन क्या क्या. So this twinkle 1 minute please. You know, it is, we have to let the others talk. He's made the point, you've made the point. I'm going to go to Mary, please. Thank you. Mary? My concern is, why is center not doing anything? Why is center keeping quiet? So how do you feel about that, Mary? I feel like democracy is the fourth pillar, and why is center quiet? This is like crazy, and I'm like sitting out here and thinking, what's going on? This is like, when Sahil was taken, like each person is taken, and this is not how democracy works. You cannot just arrest someone just like that. I think that has been the trending line today. Whenever the conversation has been flashed under the screen, all I'm saying is, what has happened to democracy? Number one, how can we protest in a democratic way? Number two, this is a fight for democracy. Yeah. It has come at the bottom. This is the biggest fight for democracy. What are we going to do about it? Because if you silence the something main we need to think. Everyone is scared, because people with who, like Arnab has lots of power, and still he's kind of helpless, and that's when when you see the thing is broken, and why is the Maharashtra government going on a rampage, and as it is kind of not right, and why is this so, why is center not doing anything? I'm sitting here and why is nothing being done? Thank you. Because nobody is following the democracy. जितने भी rules regulation थे, what a center can do या state can do, they are not going according to that. They have gone wild. तो जब आप फॉलो कर रहे हैं रूल और सामने वाला नहीं कर रहा है, आप एक चेस में आप जानते हैं कि ये जो किंग है ये किधर जाएगा, एंड बट यू आर गोइंग कि नहीं, आई विल गो लाइक ए हॉर्स और 2.5 ही चलूंगा मैं. दिस इज द वे. तो इसके लिए गवर्नमेंट को वेट करना होगा कि कितने रेगुलेशंस के हिसाब से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बिकॉज कल को फिर स्टेट में इंटरफेयर भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में डिपार्टमेंट बना दिए गए हैं कि दिस विल बी कवर्ड बाय यू. Control. State is on a rampage mode. It should be controlled. It's a rampage mode right now. Everyone is taken out. Kangana's house is broken down. Everything. It's in a rampage mode. If you look and at this has not happened first time. Vibhu, it is an anger. It is an anger, and I think आप देखें ना, अब आपको मालूम है चीजें, लेकिन अभी जो कुछ आम जनता है वो अभी जाग रही है, and I think it's very nice to express your anger. And second, also, how you can say कि whole state has gone rogue? It is only Mumbai. Then महाराष्ट्र के बाकी लोग they will start shouting ना कि पुणे में सब कुछ ठीक था. Why you are imposing president rule? Why you are imposing the central rule? These all are the cards that is playing differently by the state. They are having some cards and central is having some card. We are seeing Mumbai is Maharashtra. That is also not correct. If there is a president rule, तो इससे बुरी हालत तो बंगाल की है. बंगाल में तो governor of Maharashtra, what can he do? टुडे ही मस्ट हैव वोकन अप कि इतने आज प्रेसिडेंट को पहली बार, आप हर दिन हम लोग क्या कर रहे थे, एट द रेट नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह. अमित मोदी केम इनटू पिक्चर. ही सेड कि आई एम ऑन द लाइन, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग इट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग आई हैव admitted it कि something wrong is going out. Now today people are tagging president also because governor is controlled by president. Actually that is the बस क्या बोलते बोलने के लिए होता है. Governor is saying what is happening, but for the center to interfere, they are just finding the right rules where we can get into it. जैसे सारे महाराष्ट्र में तो ऐसा हो नहीं रहा है. Then क्या आप जब impose करोगे तो governor people will say कि you put 144 means that curfew should be imposed in Mumbai and all the cities are doing well. There is no problem.
But if you look at the Mumbai police actions, first when they unsealed, they were the Sushant's house was not sealed, the way Ria came into the Cooper hospital, everything is not according to the law. They are breaking the law by themselves. If the guardians of the law break the law, that is a big red flag. That's a red flag. It is a rogue police. Pretty much it's a rogue police. And still they're going on and on and on with full, power, corrupt power in their hand. And it is happening all in Mumbai. Nothing outside of it. It's how central government can control a city directly without Yeah, but that bypassing does all the not laws. stop her from getting angry, na, Yeah. Vivanshu? No, not only that, we need Yes. to find a solution. This is not the right way. We need to find a solution to kind of, fix the problem. To bypass all the constitutional departments or laws, they are waiting for it. या अभी तक किसी का ऐसा डेथ नहीं हुआ उसके बाद से. So both the teams are playing very smartly. We are thinking, we are making very advancing digital approach against the protest. Police are also doing the same, because if you must have seen, आज जब वो अर्नब को लेने गए थे, when they were there, Arnav was on live. Then a cameraman, a person of police was also recording the same thing live. Means both were intelligent. They were saying कि कल को बोलेगा मैंने इसको मारा, but I have also a recording at the same time, at the same second, I have not touched him. So actually this is a power play. Who is going to play it smartly? Government, central government is just waiting for one severe, you can say, error. What is the severe thing there where they have to come into action? Because this Nobody is has been killed now. so many people. So many. No, Vivanshu, don't say that, please. No, we can't just No, wait for means all they to are playing. They are We are waiting for people to get hurt. Is that the flag? No, the flag has already been there. The red flag has already come up. We can't But keep on people- waiting. This is Yeah, but Mumbai police has Mumbai is gone a rogue. city. If there's a rogue elephant, you kind of block the thing. This is like you're letting them loose. This is just crazy. You cannot let Yeah, a you can rogue say that. police go loose like that. Yeah, But there are laws and regulations for that. You can Vivanshu, directly you can constantly have this. The point is taken, Mary. The point is today, anger is being expressed. People who are more further away from home are feeling more distressed, Mary. It is true, and there is no sense of helplessness. I can vouch for that. Okay, nobody's feeling restless, but people have become alert. 4th of November has been a black day. There is anger. Some people are fearing, but I think most of us have become alert because we are a democratic country. There has been a kind of power play using democracy, and that has made the people alert. I think we should sleep with this fact that let's stay alert, because if we are not alert, this is going to go on and on. But anger is definitely I'm there. not angry. No, All I'm knowing is what is the stopping point? When does this is it? We are done with all this. We don't know. We don't know the tipping point yet, Mary. We can't wait for the tipping point. It's already begun. When Sushant, when he was brutally murdered, it was there. This rogue element is sitting right there with a glee on their head, and all this kind of thing is happening on and on and on. And it has already happened. The tipping point has already happened. I don't And think we so. cannot wait in silence. Once things tip, things flow. Things have not flowed. You can't force something that is not happening. So I'm just going to go to the Sushant with so much goodness in him got murdered. So much goodness. If he person like Sushant got murdered, and then the people who murdered are still out there. That itself is a very black kind of mark on Yes, the democracy yes. that we have. It's a black mark. I'm going to carry this thought. I'm really, and I hope many people are listening, because you could be the tipping point. I'm hoping you are the tipping point right now. It's not me. I know it started. I'm way far away from the the earthquake that's happening in Mumbai. Mumbai is the epicenter of all this rogueness right now. It's really this epicenter, and people are just looking at it like, what's going on? Like, this is not happening, but it's happening.
and I'm like, why is the police, like all the little, the foot soldiers, police are like foot soldiers of whoever is commanding them. All the foot soldiers, why are they following? They should basically, somehow we need to get that kind of, I don't know, it is like, that's why I'm like wondering why center could do something. Center cannot just watch in silence. Center's watching this. I'm going to. I'm looking at the time now. There are 6 people here. I'm going to give each a person a closing statement. I'm going to go to Deepak last because Deepak is always there to calm things down so that we can sleep well. So just Karuna for you, and we just go around because Mary, we are going to have these ups and downs, but we don't know how things. It is a war. It is a fight. Let's just stay together. Don't lose hope, but don't lose the anger, please. Thank you. It's a good anger. I want to keep it. Thank you. I take it from you, Karuna. I just want to say thank you, all the family members here for listening and allowing me to share. And I just think कि जाना है तो अभी वो कहते हैं ना वो गाना है सरफरोश की तमन्ना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हमारे दिल में है, सोचना है बस वही करना है, जाना है तो बस march on, march on and har har Mahadev. Vikas suddenly likes you. He wants to do this. No, I just really feel like जितना I feel like मैं सिर्फ एक वर्ड कहूंगी, जितना मुश्किल आ रहा है हमारे आगे, उसमें हमें take a deep breath, take more, lift more, and go forward even more harder because we cannot stop. There's no stopping us. We are just marching on right now, and we just have to be that flame and beam of light and just go marching on, everybody. डरो मत, भरोसा रखो. Yes. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. I have to go to work. I'm actually working. Yes. I have a call. Thank you. Yes, please. Bye. Thank you. Yes, Dinesh. Dinesh. Okay. This is my first time actually. I was watching all of you through my mobile, but I popped into my daughter's online class, the PC actually. For today, I joined Twitter also. Yeah. Today, after watching Varun show, I joined the Twitter also. So I was watching in my office actually. I was totally up in the morning when I wake up. After finishing my morning prayers and all, I just saw the news that Arnab is arrested. So actually, I was not a big fan of Sushant before. After this revolution and all these activities, I just followed him. I'm not a big fan of Bollywood, even though I look young and everything. I stay in UAE. I work in UAE in a oil company. But thing is that I was following Arnab from long time. Actually, when he was in Times Now, also I was following him. I'm a big fan of him because of what he's talking. Like he's always keeping truth on the table. So it was good to me, and I'm away from India like almost 10 years, going once in a year or twice in a year. So we get all the information from India. And back to this subject, I was working in Mumbai like 4.5 years before. So I know the situation in Mumbai. I have caught by Mumbai police many times while I driving while I'm driving in a bike or a car. Many times I got hold of them because they are very strict in one way, but it was very disturbing to the common people also. Even they see everyone as a problematic and everyone as a culprits or something like that. Even common man's. I'm not thinking about talking about the like politicians or other people. Yes. Only common peoples. Yeah. So this I have gone through like 4.5 years. Today matter was very disturbing. Like I was not able to work in the office. I took a half day and came back to home.
I was just sitting quiet. I was afternoon. I sat in front of my God room like I was praying from Arnav. Like what is going to happen? Because I saw now the latest news. They put a complaint on him like he was pushed some lady police constable or something inside the home, and they put a complaint on his family also, his wife, his son also. It's very disturbing, very too much disturbing. So I don't understand yeah, what is happening. But It's a, I have a I have a my inner thought is saying like Arna will come out of all these things. Yes. Thank you. Yeah, he will come out of all these things because I am a religious person. I follow means every day, like I at least half an hour or 1 hour I sit in front of the God, even for a peace of mind or anything. Like I am not I never prayed for myself. I prayed for everyone. Like I am a that type of person. But today it was disturbed a lot. So I was praying like half an hour to 1 hour to only for Arnab. And in my subconscious mind, it came that like he will come out of everything, and this what today happened. It will be a plus point for Arnab. It like looks like Arnab will go more powerful after coming out of this. I feel like means in my subconscious mind it was saying he will Yes, come out of he will yeah. come out he will come out of this. He will be more stronger. He will be more stronger. I know. And Yeah. after coming out of this, he will he will disclose many things of this Mumbai government and Mumbai police. My inner feeling is saying. And I was seeing some YouTube channel and some astrologer or something. I don't believe astrology, but he was saying like it will be he will be inside at least for 10 days. I don't know this. He was saying it he will be inside at least for 10 days. After coming out of there, he will be like the government will go by like January, mid of January or Yeah, but something. let's not I get don't into know. predictions. I I would don't know. just say, no, but I would just say, Dinesh, there's one thing here. What you said beautifully. I hope 4th of November hits the conscious. People have consciousness. There is a conscience inside people. It touched your conscience. You're a working person. If 4th of November hits the conscience of some Indians, I think it was worth Arnab going to jail. Yeah, true. Yeah, because this conscience is something that is not stirring enough. So I'm very, very grateful that you came, and you could be many people around who have just woken up today. So No, I'm very, very glad see that this after happened. once because I have a lot of friends in Mumbai because I worked 4.5 years there. I was calling them. They are regretting why we voted for them now. They are regretting, literally, they are regretting why we voted for them. So Mumbai is not like, see, in there, like, I don't want to specify these people, Mumbaikars or something. Yeah. Yeah, Please, yeah. yeah. But these people will not understand these things. These will, it something happens to them only they will understand, because I know I worked in a corporate world there, how they treat outsiders and insiders. Because I am from south, I am from south, I am a Mangalorean. I went to Mumbai for something, like, so for something you have to lose something and go for somewhere to do something, but the treatment is totally different. Always it was there from long time. It will be there in future also. But today we are standing for some justice. So this platform is very good platform. I thanks Varun for giving Yes. this platform.
And I just today joined the Twitter. I was watching the Twitter. Like Vibo, your last video with the dog or something. You are asking to the dog. Vivanshu is talking to you. Vivanshu. Yeah. So your tweet with your dog, he yeah, says. yeah. And additionally, Gunjan Didi, she was every 5 minutes she was putting a video, and it was hats off all of you guys. So So I would thank just say, Dinesh, welcome. You're most welcome to come on the platform. We're kind of running short of time, so I'll have to cut yeah, short. yeah, I let you talk because it was your first time, and I think yeah. it would not be fair to hear you out. But there's something I want to say. Mumbaikars know how to fight back. Yes, yes, They yes. will fight back. I have complete trust in the Mumbaikars. Huh? When the time's right, they will fight back. They know how to take care of their Mumbai. So that's having said that. I think I have to go to Deepak now because it's getting late. But I will go to the others. But Deepak, आपको बात ही नहीं करने दी, so I should let you talk now. No. Namaste to everybody. Namaskar sabko tahe dil se. And gentleman who's from Bangalore, I like, no matter what it is, I like the positivity that you have it. Keep it up. I really appreciate when a person comes with a positive mind, no matter what is going around, how it is going. This is the vibe that I don't know how you have this. But everybody, I heard a lot of people. There was one more American girl who said, कि हौसला जिगर में है या बुलंद जो भी है. So positivity is very important for us to have that. Earlier also, due to some constraints, I'm not able to come for a longer time. But no matter how much time that I get, I try to dedicate it. Through our hard times, we are still taking out time, and I really appreciate, and Shailaja ji, Vipanshu ji, hats off to these kind of people. They are putting so much hours of time. I feel so proud, that yes, that motion comes in. No, really, really. It's, people, there are a lot of people, they talk, they come here, they will, aggression, I'm telling, transform that energy. वो जो गुस्सा है ना, उसको कुछ source में ऐसा transfer करो ना, make it a pipeline that you work out on something that will work towards this prosperity of justification or justice जिसके लिए हम लोग fight कर रहे हैं. So we should come out of with this idea, and that's why, like Vibhanshu says, that what he's trying to pipeline things and try to the way that he's framing it. Absolutely right. People are trying to play mind games, but they think there should be an error. कोई तो गलती कर रहा है, पहल कर रहा है. They're looking पहले आप. It's all behind the scene going on, and it's a delicate game. It's a game of chess where one wrong move can put you in a, what do you call it? पासा पलट चेस में जाता है. वो कौन सा टर्म होता है पासा अंग्रेजी पलट में? जाता है. पासा पलट जाता है. यस, हाँ, चेकमेट हो जाता है. Yes. So you can be checkmated with one small wrong move, and you never know, that would be a silly move. So जो भी हो रहा है, but we should not forget our responsibilities, duties, like you all people are doing, coming on the comment platform, and being motivated and being motivated and motivating others. It's more important because you have to be motivated to motivate others, and I think so much energy you all people have. I'm really thankful to be around these kind of high energy people, so I could also spread some energy. Naushir ji, namaste to you also personally. So I hope everything goes very fine. Anything, कहते हैं कि कुंदन भी जो है वो कहाँ से तो एकदम, कठिन परीक्षा के बाद में कुंदन बनता है. So whatever this gentleman is going on up will come out through. It's a hard time. No matter whatever happened, it's a reality seen fact that he's been pushed and taken. This is a fact, we have to gulp it, but not to accept it, but to take an action against it. Am I right, Sharaja ji? I think I'm if listening. positivity Like I से said, जाना. आज इतना confusion है मेरे दिमाग में भी कि मैं आज सिर्फ सुन रही हूँ, and I'm going through every सबका बात सुन रहे. I think we should sleep over this
Huh? We will meet next Yes, Monday again. And of course, Varun is bringing definitely. some nice guests. And जो forefront में है वो तो forefront में है. हम लोग सपोर्टर्स हैं एंड वी विल डेफिनेटली सपोर्ट. मेरा ये है कि हमारी कहीं बात ना रह ना जाए, हम लोग क्वेश्चंस ही ना पूछे. कभी कभी ना एक दूसरे से भी एनर्जी लेना जरूरी है. सो आई एम Yes, रियली थैंकफुल. definitely. Thank you, Vivanshu, for coming. It was not an easy day for many. Like, I'm really grateful for everybody to come, and definitely we'll take this forward and we'll keep meeting. And I'm very grateful कि ये सेशन हुआ. और मुझे आज थोड़ी ठीक नींद आएगी क्योंकि मैं दोपहर से आई वाज थिंकिंग आज तो हो गया, आज तो हो गया, आज तो हो गया. It was very strange. I didn't know whether to be angry, whether to feel that this is we're going ahead, we're feeling powerful. It was very confusing. तो थोड़ा ये कॉन्वर्सेशन में ना कुछ चीजें अनरावल हुई, वो गुत्थी सुलझ गई है. So I'm very grateful for that. So thank you so much. And with that, I'll call it a night. कभी Thank कभी you, होता है Vikrant. ना कि कभी Sorry. कभी होता है ना कि हम लोग एक डीप साय लेते हैं, मालूम है, ऐसा करके. तो ये इट्स लाइक काइंड ऑफ डीप साय दैट वी टेक इट, यू नो, दैट फेस इज दिस. और जो भी होता है, आई थिंक सो, यू नो, पीपल लाइक विभांशु शुड come out, you know, such a sensible talk, absorbing everything, you know, like a sponge, and then coming out. It's so nice. I really like, you know, people like you coming out on the platform and talking so sensibly, absorbing, dedicating their time, you know, because this time will not come back to him, whatever he is giving here. So let's not go this way, guys. Keep our spirits very high, hopes very high. क्योंकि कितना भी अंधेरा होगा ना कहीं तो उजाला आएगा ही आएगा. और कुछ दीपक जब देना जले चाहते हैं विभांशु तो इसमें? सबको उजाला ही देगा. टिप्पणी देना चाहते हैं No, इस simple. बात If पर? we have all heard about why a thing is black, why a thing is white or of different color, the color it reflects and come to our eyes is that color what we see. इसका मतलब ये है कि we are in illusion. Actually वो उस कलर का नहीं है. वो उस चीज ने सारे कलर्स एब्सॉर्व किए और एक रिफ्लेक्ट किया जो आपको दिखा, एंड यू थिंक दैट इज ब्लू एंड दैट इज ग्रीन. एक्चुअली वो उसका कलर क्या है यू हैव नेवर थॉट ऑफ. सो अगर अभी आपको ब्लैक दिख रहा है, दिस मीन्स someone is just sucking up all the colors so that you cannot see anything, and in a dark you can blame anyone. तो कोई अच्छा काम कर रहा हो, खराब काम कर रहा, ब्लेमिंग, आप ब्लेम की जगह सिंपल वेट कर लो 2 घंटे 4 घंटे. आपको कोई एक वीडियो आते हैं रिएक्ट नहीं करना चाहिए या फिर कुछ होते हैं, हर कुछ प्लान्ड है. जैसे अर्नब 5 मिनट पहले प्लान्ड हुए होंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट पूरे एक दिन प्लानिंग बनाई होगी कि आज न्यूज चैनल्स किसमें बिजी होंगे तो हमें क्या करना होगा. दिस इज और प्लानिंग, दे आर डूइंग इट, और उनका वो काम है. जैसे प्रोटेस्ट भी, मैं आज निकल जाऊं और जेल जाऊंगा कोई छुड़ाने नहीं आएगा, लेकिन जिनको पता है प्रोटेस्ट कहाँ करना है और क्या क्या लीगलिटीज को ध्यान में रखना है, उनको 2 घंटे रखा जाता है और फिर घर पे छोड़ दिया जाता है कि घर के पास कि आप चले जाओ. तो हमें अभी थोड़ा सा सेंसिबल रहना पड़ेगा. क्वेश्चंस तो बहुत हैं, आई विल ट्राई टू एब्जॉर्व ऑल और एक आंसर बना के देखूं. सो वी विल कंटिन्यू इट अगेन. Yes, thank you. Yes. So on that note, people, I wish you Keep all the a good good work night, up. and please keep up the good work. Keep Good the night. josh high, जैसे वरुण कहते हैं. शुभ Keep the रात्रि. josh high. Shubh Ratri. शुभ रात्रि. Good जय night. हिंद.